Neeraj Kumar, Tripurana Sai Teja. And for Jharkhand playing 11, it is Saurabh Tiwari, Nazim Siddiqui, the captain and the wicket keeper, Vikash Vishal, Kumar Suraj, Mohit Kumar, Atul Singh Surwar, Ravi Yadav, Rahul Shukla, Yuvraj. Thank you very much, and special awards for you to getting all those pronunciations correct. Don't even realize we don't pronounce the names the way they should be. I remember a certain Hansi Cronje. First he was pronounced as Hansi Cronje, then he himself said no, it's Hansi Cronje. So similarly, for example, Manas Labuschagne, it's not Manas Labuschagne, it's Manas Labushkhane. So of the French players, J is silent, I is silent, and the normal Indian would ask, फिर आपने J और I रखा ही क्यों है? अगर आपको वो सड़कों के नाम कुछ बहुत डिफरेंट है, लिखते कुछ और है और कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और समझ में तो हमें आता ही नहीं है बिल्कुल. बट नहीं, हम यहाँ पे किसी भी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रहे, बस कह रहे हैं कि अगर आप भाषा का सच्ची में मुझे ऐसा लगता है कि लेग स्टंप के बाहर, जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बाहर पिच होती हुई बाहर की तरफ लगे, और ये बेसिक टैक्टिक होता ही है फील्डिंग टीम का, बॉलर्स का, कि आप दबाव डालिए अंपायर पर. अब यहाँ पे रिव्यू सिस्टम तो है नहीं, अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो फिर आउट ही होगा. तो ये डोमेस्टिक के हर मैच में चलता है ये, और कभी कभी तो मैंने सुना है और इसे पंच कर दिया कवर के दिशा में 4 रनों के लिए. तो ये पहला इजाफा होता हुआ आंध्रा के स्कोर कार्ड में 4 रन बिना किसी नुकसान के सिमिलर, और इसीलिए यहाँ पर कनेक्ट कर पाए. अब क्योंकि पिछले बॉल पर पैड्स पर लगी थी, तो यहाँ पर प्रणीत ने कदमों का इस्तेमाल किया, स्विंग जो भी है उसे नकार दिया बिना कोई नुकसान के, और एक इंटरेस्टिंग बैकलिफ्ट ऑलमोस्ट सौरव गांगुली की टाइल, लेकिन पूरी तरह से सौरव गांगुली नहीं. और यहाँ पर एक अच्छा शॉट, लेकिन अगर सच कहूं तो कवर के फील्डर को उसे रोक देना चाहिए था. ओवर पिच थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे ड्राइव कर दिया सीधा कवर के पास, लेकिन खिलाड़ी ने वहां पर फंबल किया और 2 रन यहाँ पर मिल गए आंध्रा को. तो जब मैं बैकलिफ्ट की बात कर रहा था, स्टांस की बात कर रहा था प्रणीत की, सौरव गांगुली की तरह जरूर बैक प्रॉब्लम आप इनवाइट कर रहे हैं अगर आपने इस तरह की बल्लेबाजी या स्टांस रखा तो. आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, यहाँ पर इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद आंध्रा ऑफ टू अ फ्लायर. Gear up for the ICC Worlds Australia ODI Series, live commentary starting from the 22nd of September until 27 ND September. Catch the live action, only on Cricong. Stay updated with Cricong's live blogs, real-time scores, and exclusive match predictions by cricketing experts. It's a clash of titans, a test of skill and determination, and an opportunity for nations to showcase their cricketing prowess. It's your virtual companion to the ICC World Cup 2023. Feel the pulse of the game as you join millions of cricket enthusiasts from around the globe, united by a shared love for this beautiful sport. Be part of the action, be part of the excitement. Because when cricket is live... Gear up for the ICC World Cup 2023. के ऊपर से कह रहे थे कार्तिक के जो मन्याला प्रणीत का जो बैकलिफ्ट है या फिर स्टांस है वो थोड़ा सा सौरव गांगुली की तरह है, लेकिन तकलीफ दे सकती है. ये एक ओवरऑल विजन या फिर एक ऑब्जर्वेशन कहता है ना कि आप जितने ज्यादा झुकते हैं, या फिर मुझे लेफ्ट हैंडर्स में सबसे ज्यादा स्टांस अच्छा लगता था वो कुमार संगकारा और मैथ्यू हेडन का. काफी ओपन स्टांस से खेलते थे, इसलिए एंगल्स जो ग्राउंड के है ना वो कोई बंद नहीं होता. तो ये अगर आप बहुत ज्यादा झुक के खड़े होते हो ना तो एक ही तरफ आपका ध्यान रहता है, और किसी कारणवश यहाँ पर जो है खेल रुका हुआ है पहली ओवर के बाद. और राहुल शुक्ला कह रहे हैं अंपायर से कि मतलब वार्तालाप हो रही है, कुछ बात कर रहे हैं अंपायर से स्क्वायर लेग पर, और कुछ शायद उन्हें कुछ कंप्लेंट है किसी चीज से, लेकिन बहरहाल अब स्टांस ले ली है खेबार ने. अश्विन हेबार जो आए हैं ओपन की स्कोर को भी आगे बढ़ा. एक दबाव नहीं है, आपको कहा गया है कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए बैटर्स के सामने, कि उन्हें ये निर्णय जो है वो उलटफेर करके दिखाना है. अभी तक वहां पर सौरभ तिवारी के साथ कुछ वार्तालाप हो रही है अंपायर की, और छोटे से अंतराल में आपसे जुड़ते हैं ताजा खबरों के साथ. बने रहिए. Get ready for the mother of all cricket battles as our tribals India-Pakistan cricket match. It's a cultural phenomenon, a rivalry that transcends boundaries and ignites the passion of millions.
India versus Pakistan encounter promises to be a high-voltage affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, skills, and strategy, as these cricketing giants aim to outdo each other. With both India seeks to maintain its dominance, while Pakistan yearns to turn the tide in their favor. Cric ensures you don't miss a single moment of this cricketing extravaganza. Our comprehensive coverage includes. Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan, a rivalry that transcends boundaries and ignites the passion of millions. India versus Pakistan encounter promises to be a high-voltage affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, boasting exceptional talent and a history of iconic moments. The match on October 14th is destined to be a nail-biter. India seeks to maintain its dominance, while Pakistan yearns to turn the tide. Intensive coverage includes. Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan face off in the 12th ODI of the ICC World Cup on October 14th. This clash is not just a cricket match, it's a cultural phenomenon, a rivalry that transcends boundaries and ignites the passion of millions. India versus Pakistan encounter promises to be a high-voltage affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, iconic moments. The match on October 14th in their favor. Cric ensures you don't miss a single moment of this cricketing extravaganza. Our comprehensive coverage includes. Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan face off in the 12th ODI of the ICC World Cup on October 14th. This clash is not just a cricket match, it's Pakistan encounter promises to be a high-voltage affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, skills, and strategy, as these cricketing giants aim to outdo each other. With both teams boasting exceptional talent and a history of iconic moments, the match on October 14th is destined to be a nail-biter. India seeks to maintain its dominance, while Pakistan yearns to turn the tide in their favor. Cric ensures you don't miss a single moment of this cricketing extravaganza. Our comprehensive coverage includes. Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan face off in the 12th ODI of the ICC World Cup on October 14th. This clash is not just a cricket match, it's a cultural phenomenon, a affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, skills, and strategy, as these cricketing giants aim to outdo each other. With both teams boasting exceptional talent and a history of iconic moments, the match on October 14th is destined to be a nail-biter. India seeks to maintain its dominance, while Pakistan yearns to turn the tide in their favor. Cric ensures you don't miss a single moment of this cricketing extravaganza. Our comprehensive coverage includes. Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan face off in the 12th ODI of the ICC World Cup on October 14th. This clash is not just a cricket match, it's a cultural phenomenon, a rivalry that transcends boundaries and suspense. It's a battle of nerves, skills, and strategy, as these cricketing giants aim to outdo each other. With both teams boasting exceptional talent and a history of iconic moments, the match on October 14th. Tournament in the world. Download the Cric app now and get ready for an unforgettable experience. We'll bring you all the latest news, the heart of the action, no matter where you are. You'll be able to watch live matches, follow ball-by-ball commentary, and get the latest scores and statistics. You'll also be able to interact with other fans and share your own thoughts and predictions. So what are you waiting for? Download the Cric app now and join us for the ride. Together, we'll make the 2023 Cricket World Cup the most exciting.
Umpires have some issue with Saurabh Tiwari. Maybe it's regarding the playing 11 or something like that. We are not sure what's happening out there, and unfortunately, we can't do much rather than just. What is it? We are just waiting. We can't do anything else other than just wait as of now. And now even the fourth umpire is out in the middle. So definitely informed or has been added off late. And Saurabh Tiwari is in a heated discussion with the umpires. And now it does seem as if this is going to be a massive delay, because now breaks and podcasts, and I think what we will do is we'll just slip into a podcast break wherein we will win the 2023 World Cup, etc., and hopefully we will be back as and when this, hopefully, as this game resumes. So please excuse us for the time being. We'll be back as and when we get any kind of news. Till then, please do be there in our chat section. We'll try and update there as and when we get any kind of news. Please do listen to our podcast in the meanwhile. The sun is rising on a nation incredibly vibrant and culturally rich. As the sights of the sporting world turn to one of its greatest stages, India welcomes us to join in with an exhilarating mix of heritage, diversity, expression, passion, and energy. For many Indians, it's their first love. It's not just a sport. 2023 will celebrate its own Navras through the emotions of joy, power, respect, pride, bravery, glory, anguish, wonder, and passion. Inspired by the ancient Indian tradition of woodblock printing, emerges an identity that aims to capture the essence of cricket in India and bring this World Cup to life one emotion at a time. At the heart of our identity sits the iconic Men's Cricket World Cup trophy. An uplifting nod to the 10 nations that will compete for it and the millions of fans who will unite in celebration of cricket. Welcome our colours into every stadium as we witness legends being born and the absolute best cricket has to offer in one day, to welcome every emotion and sense coming alive, to welcome the ICC Men's Cricket World Cup India 2023. 4 out of the last 5 World Cups have been won by the home side. It's in India. Favourites just because of the amount of quality sides there are out there. If you look at their squad, I mean, they've got 2 of the greatest white ball batters there have ever been in the game in Rohit Sharma with 3 double hundreds in this format, and Virat Kohli, a great player in any situation, but a greatest player in a run, standing bonus because he bowls in all phases of the game. So I think that batting lineup and the bowlers there are, that is right up there with one of the best squads in the tournament. What they probably lack is, if you look at their batters don't bowl and their bowlers don't bat. So it's a different makeup to their side to maybe an England with all the all-rounders or an Australia with all the all-rounders. And the other thing they will have to owe, maybe since 2011 in ICC events, is that when they get to a knockout stage, we were there in Adelaide in the World T20, they sort of plodded along to a below par score against England. England knocked them off, none down. In the New Zealand semi-final in 2019 on a pitch that was doing a little bit, they plodded along. They've got to go above par. They've got to play a bit fearless cricket when you get to a knockout stage. I think they'll get to a knockout stage. When they get to a semi-final and the pressure's on, that's when they still need to play fearless cricket. But the one thing that just to add to Nasser's point about how strong they are, that even adds more to it, is the fitness levels of Hardik Pandya, his ability to be able to bowl. He's bowled a little bit in the Asia Cup so far, but he's bowled really, really well. And there are very few sides throughout the tournament that would be genuine contenders that have somebody that bats in the top 6 that has an ability to bowl. So it's the old Ben Stokes role that we had for years with England. Australia have the likes of Stoinis and Cameron Green, but that role genuinely Half bad news is we don't know what was the delay. Why the delay was. We can only assume from what we saw that batting captain. No, they play for the same team. Oh, I'm sorry.
Yeah. Oh, Saurabh Tiwari is not the captain. My bad. They Yeah. play in opposite team. Ricky Boy is in the batting team, and Nazim Siddiqui is the keeper captain for Saurabh Tiwari's team. And Saurabh Tiwari had a problem with somebody from the opposite team, and wherein he was not a captain, he was not informed about the changes. Two captains knew, but then he went ahead with the discussion with the umpires, and then all was the break history. Yeah, and to be very honest, we don't know. We don't know minutes because this match was no 25 minutes because this match was had started at 1:15 and then we went into break at 1:20. So 20 minutes we have had absolutely no play, and now Rahul Shukla charging in. He actually charged in, and then at the last moment he seemed to stop for a bit, bolted on length outside the off stump, and well, it was punched towards cover. And yes, both the batters now. This was an unwanted break because after getting 10 runs from the opening over, they would have definitely wanted this innings to go on, progress, take the momentum, to know what is the issue, and we will also let you know accordingly. But for now, it's we just assume, we just say that there was a delay and we move on with it. One slip in place for Rahul Shukla and he bowls it on the patch. It is flicked straight to short mid wicket, no chance of a run being taken. So 2 dot balls, and Ashwin Hebbar and Manyala Pranit will have to consider as if this was a drinks break, and then they have come out of maybe a 19 over contest, because it just does not matter now what happened in that first over. You've got a 20-minute break, and no one would like it. Not even the fielding side would like it, because they have just robbed you of momentum. 10 for no loss are Andhra. Yes, and when you're robbed for a momentum, what can happen is you can lose your wicket, and that can bring about a collapse as well. You never know. A good start of 10 runs in the first over, then a single of the 4th ball of the second over. So this is where actually some mind games need to be put into the box rather than playing it from outside the box. And I think it is there upon the officials, the captains, the referees to decide, not an individual player. No matter how big of a player you are, if you are into a team and you're not the captain, you have caps. This is something which I feel is wrong on the field, and I think you should take it up to the officials. That is a protocol that needs to be followed. And sometimes people think, I'm not targeting Saurabh or I'm not targeting any player for that particular thing, but some people sometimes feel that they are bigger than the game, which is not a good sign. Cricket as a career, and where this sport is about skill, and it's always about character. Sometimes it is about your patience in the middle. 11 for no loss in 1.5 with Manyala Pranit scoring the 10 runs with 2 exclusively timed cover drives, one through the covers, one over them, and now a single to end the second over. 12 for no loss are Andhra. Kong app. Download it now for an unparalleled experience during the World Cup 2023 ODI. We're your gateway to all things cricket, delivering the latest news, in-depth analysis, and exclusive content that's second to none. Brace yourself, as World Cup is always full. In the past, we have seen teams like Afghanistan and Ireland come close to beating some of the top teams in the world. In the 2009, which teams will be the ones to watch out for? With Cric, we ensures you're never far from the action. Kumar before the break, Yuvraj Kumar after the break. Absolutely no difference, because he has been treated with disdain. A length ball around the legs, but Pranit made it sure that he's got it behind square leg, and the ball was into the gap. From a rare point of view, or maybe I thought that was a boundary, because it had bounced well inside the ropes. And yes, the umpire has corrected it. The umpire has made it as a 4. So the score now is adjusted to 16 for no loss. So I personally believe that was a risky shot. Maybe what Pranit was trying to do was trying to get it over short fine leg. But yeah, so maybe as an afterthought, I might consider this for a single. As long as you don't repeat the mistake, it's fine, because mistakes do happen. That's why we are all human beings. We are mortals. Otherwise, we would be gods if we of which 15 have come off for Yuvraj Kumar's bowling. A length ball outside the off, and this is punched between cover and extra cover. This is beautiful placement. Beautiful placement, absolutely, from Ashwin Hebbar, because sorry, that's not cover and extra cover, that is point and extra cover, and he
brilliant he played. Maybe the only argument that I can have is the fielder from point or from extra cover could have dived to his left or right, but other than that, it's a Good start by the openers. You try to build on the momentum, and this is where things could go wrong, and it would be playing on their minds. What, we have lost 20. Play that expansive and away from the body cover drive. He just went into the shot, completed, and only to realize that is in the air, and enough of that distance from the ground to get into a regulation catch at covers. And he wanted to play actually over the fielder, but the ball rushed onto him, and it was just that moment when this break is going either way. They've got those boundaries in the first 3 balls after the in that over. You're not in that zone actually to come and bat at this moment, because you went into the 20 minutes of relaxation time. You never knew that you would be going there, or it will take time for you to go there. Everybody was a semi-relaxed position in all the dugouts, both the dugouts rather. And now, all of a sudden, Yara Sandeep comes in at number 3, and he will try to maintain that momentum, the pace at which he runs, and then he sees the ball straight up, calmly and collectively. He just decides to leave it on its own. This is what a batter can do to just gain confidence, be calm. Doing last ball of the third over coming up, and now he cuts it straight to the field at point where there is no chance of a run to take. 3 overs, 21 for 1 are Andhra. Cup 2023 is here, and it's a celebration of the spirit of cricket. Expect sensational centuries, breathtaking catches, and unforgettable moments. This year's tournament promises to be a rollercoaster of emotions, and we're your ticket to the heart-pounding action. 2019 edition, England's scripted history by clinching their first resonate for generations to come. Stay connected to real-time updates, thrilling highlights, and expert analysis. Cric ensures you're always at the forefront of the cricketing excellence that defines. We have had plenty of things happening. Opening over, then we had a long 20-minute break for which we have no idea why was that break taken, and then we had a mixed over post the break, because Rahul Shukla was bowling well from one end. He went for just 2 in his opening over, but then Yuvraj of his he managed to get the wicket of Ashwin Hebar, and as Swapnil rightly mentioned, relaxed. Maybe the batter is irritated, because when we don't know why is that break for about, there are 2 ways. When there is nothing to do, there is nothing waiting for the India-England game to happen. Not wrong. Australia batted their whole innings, and just when Netherlands had lost 6 wickets, the rain came back again. So Australia will not complain, even though the match was abandoned. But that's a lovely shot from Yara Sandeep. Has it gone all the way? Yes, it has. A slower delivery outside the off stump. He just leaned into it and pushed it, just connecting with Mother Earth. The ball was beyond the ropes. Fantastic shot. A 6 over long off, 28 for 1. Of the running style of Rahul Shukla. Remember, of one of the bowlers from the Lakan team. I think Arjun or Bagar was Arjun. And because kind of release which Deva had at the end, just that open-hearted, open-chested. Bhima. The turban? Yeah, Bhima. Deva Bhima. Yes, and Manyar Pranit, he's given out a start which will be just expected to carry out the momentum by all the, and Manyar Pranit has just counter-attacked Rahul Shukla, and that is the second sixer of this over. Started off with a dot delivery, then a single, then it was a sixer from Yara Sandeep, then again his line and length right, and right hand left hand combination will always keep you dicey. 35 on the board with that 6, beautifully timed. That was more of a glorious shot when the left handers hit them. Now towards our Andhra. Cric,
your Cricket World Cup companion. Join us on a quest for cricket. Will established champions maintain their reign, or will emerging talents steal the spotlight? Be part of this captivating story, where cricketing dreams come true. This tournament is a stage where cricketing dreams are born and legends are made. Will the established cricketing giants continue their dominance, or will the rising stars seize the spotlight? With Cric by your side, you'll witness every breathtaking moment, every match-turning performance, and every record-breaking feat. As the cricketing world unites in anticipation, Cric will be your trusted companion. From live scores and in-depth analysis to exclusive behind-the-scenes access. Weird, very weird. This we are talking about the batting stance of Manyala Pranit, and really it's a back injury waiting to happen. And if I look at that, I just remember the baseball stance wherein they bat with a lesser, not the heavier bat, the lighter bat. It's not even a bat. I'm not remembering what is it called. Baton? The baton, yeah. And the way they the way they hit, it's very easier to bat. Another thing what I remembered of is when you see batters, so suppose if you see the number 4, Manyala, I am not too sure. I think this is a back injury waiting to happen if this is the stance of yours. I know it is very difficult to change the stance because stance is something no one teaches you. At the most, the coach might teach you keep your foot in line of the leg stump or foot in line of the middle stump, depending on what guard you want, where your bat should be. But other than that, how to stand is just a habit you get into yourself. Similarly, as when you become the arm rotation, the angle, etc., might just be the extra tips given by the bowling coach or whoever is observing. But other than that, it's totally Instincts that come out when you start playing cricket. And the previous delivery, it was just at back of the hand delivery. It stopped on the way while coming, and it held its line. It was not in the range to be hit. He drove it towards the covers, but knows if I cannot get it through covers, if I'm not able to get the line to hammer the ball towards mid wicket, let me go straight. Straight is the main mantra of success. Be straight, get all those runs required. First 6 overs are damn fruitful. 570 on the board with the loss of 1 wicket in the power play. You are set to for a say 180, 190 towards the end of 20 overs. Now in the 5th over, your target is 41. Your target should have been 50, 55, but you're 41 for 1. You know that both the batters have got the rhythm now. Even Yara Sandeep with those good couple of hits. One for a 6 and then for a 4. He started to combine his efforts with Manyala Andhra after being asked to bat first. 2023 is your ticket to cricketing paradise. Cric invites you to witness the magic unfold as teams from around the globe compete for the ultimate prize. Cric extends a warm invitation to cricket enthusiasts worldwide, inviting you to experience the awe-inspiring spectacle that is the ICC World Cup. Brace yourself for edge-of-the-seat moments, heart-pounding finishes, and a showcase of unparalleled talent from cricketers hailing from differences that will etch themselves into the annals of cricket history. New heroes will emerge, and familiar legends will strive to etch their names in glory once again. With Cric, you won't miss a single ball of this epic cricketing journey. Get ready to be captivated by World Cup wonders. World Cup wonders await on Cric. right. S. Shekhar is the new batter, new bowler, and oh, now, was that a catch? Manyala Pranit leaned out and drove it through point. The fielder at point dived to his left or dove to his right, not left. Sorry. Is the scenario? Was there any bat involved? Was there any catch involved there, or did it bounce in front of the fielder out there? We will let you know in a short while. But Shekhar now getting ready to come over the wicket to Yara Sandeep, a right-handed batter, no slip in place. Final over the power play on a length around the off-stump, angling in, and it is worked to the right of mid-on. And initially, I thought it should have been an easy fielding. Initially, that is my perception. But as we say, outfields can be your friend, can be your foe. And the moment the ball touched that outfield, it
it just zoomed across, and even the fielder there realized it, because initially he set off, he thought it's just going to be a single, but then he realized, yeah, he had to do some work to ensure that it was just a single. Otherwise, 47 for one around the wicket to Shaker, so pretty much standard, beautifully bowled on a leg, just holding its line a little bit. Pranit tried to steer it towards third man with an open bat pace, but was beaten by pace. 47 for 1 are Andhra. You know what, both the batters have now strived to just contain themselves from hitting those risky shots, but they are not the backward point region where there is chase for the fielder, and before it is fielded, it's a couple of runs added to a total. Manyala Pranit is shaping his innings and taking his team to a good set of runs. This is quite understandable that he needs to just step on the pedal as well. It's I say 5.3 because that is a no ball. So a couple of runs added, one of the no ball as well, and now that would be a free hit delivery from the bowler Saurabh Shekhar, who has given out 5 runs in the first 3 deliveries. We'll have to see what happens here. Outside the off stump line, batter could offer the free hit delivery. The bowler tried to be as wide as possible, but that was then. But nevertheless, he's bowling all those 3 remaining deliveries once again. Round wicket to Manyala Pranit, who drives a straight delivery straight towards the mid-on region, where he'll get only a single. So not much that a free hit could offer. A wide ends in 7 runs of the first 4 deliveries of Saurabh Shekhar. This is where you need to just get your team back into action, because a couple of wickets here and it would drastically change. Sometimes you think because of very well paced batting effort by both these batters, and sometimes you can get carried away by that momentum, and you can fall short of your target, which is decided in the team meeting before you start the innings. Yara Sandeep and Manyala Pranit need to understand the importance of their presence on the field. Sometimes you do not actually want to throw a wicket, but in order to get those runs quickly enough for your team, you tend to play a rash shot and get yourself in a dangerous situation. Last ball of the 6th over, last ball of the power play coming up here, or the deep third region, getting a single, and it is just that over coming to an end. 54 for 1 after the power play. Our Andhra team. World Cup wonders await on Cric. The ICC World Cup 2023 is your ticket to cricketing paradise. Cric invites you to witness the magic unfold as teams from around the globe compete for the ultimate prize. Be prepared for nail-biting finishes, inviting you to experience the awe-inspiring spectacle that is the ICC World Cup. Brace yourself for edge-of-the-seat moments, heart-pounding record-breaking innings, breathtaking catches, and match-turning performances that will etch themselves into the annals of cricket history. New heroes will emerge, and familiar legends will strive to etch their names in glory once again. With Cric, you won't miss a single ball. World Cup wonders await on Cric. The ICC World Cup 2023 is your ticket to cricketing paradise. Cric invites you to performances and the emergence of new. स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बड़ा डिले था वो। बैटिंग लग रही है, सब पिच एकदम आराम से ऐसे लग रहा है कि रन्स बन जाएंगे, और थोड़ी देर में हम यहाँ पर आपको ईरानी ट्रॉफी का भी अपडेट विमेन, वहाँ पर उस मैच में तो बारिश है, पर फिलहाल हम ईरानी ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भारत के फ्यूचर के बारे में है। भारत में अगर अभी जैसे कि वर्ल्ड कप समाप्त हो जाएगा तो वर्ल्ड कप के बाद शायद यहाँ पे चेंजेस नजर आएंगे। फिलहाल छोटी गेंद है, उसे पुल कर दिया यारा संदीप ने लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 ही रन मिलना चाहिए वहां पर, और 1 ही रन मिलेगा भी। 56 1 विकेट के नुकसान पर, तो अब तक 56 है स्कोर, और कोई भी यहाँ पर कठिनाई नहीं हो रही है। छोटी गेंद गूगली ऑफ स्टंप के बाहर, और उसे पंच कर दिया है बैकफुट पर
कवर्स की दिशा में और रन लेने का वहां पर एक मौका जरूर मिलेगा और एक रन जरूर लिया है वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 57 एक विकेट के नुकसान पर आंध्रा झारखंड के बीच, आंध्रा और झारखंड के बीच ये मैच चालू है और यहाँ पर अभी तक आंध्रा का दबाव रहा स्थित है और आंध्रा ने 2 मैच में 2 जीत हासिल की है। जयपुर है 57 एक विकेट के नुकसान, 58 एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद गुगली और इसे स्टेयर कर दिया शॉर्ट थर्ड की तरफ, जहां पर एक ही रन होना चाहिए था, लेकिन खिलाड़ी वो कहते हैं ना, आपकी नजर जो है ना अर्जुन की नजर की तरफ, अर्जुन की नजर की तरह होनी चाहिए। अगर पेड़ पर पक्षी बैठा है तो पक्षी की आंख पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी आए हैं वो पक्षी की आंख को छोड़कर दूसरी चीजों पर नजर डाल रहे थे, जिसकी वजह से नजर हटी, दुर्घटना घटना में आते हुए। 7 ओवर के बाद आंध्रा 60 एक विकेट के नुकसान पर। और हम ये मौका लेते हैं ईरानी ट्रॉफी के बारे में आपको अपडेट देने के लिए। ईरानी ट्रॉफी होती क्या है? ईरानी कप होती है जो रणजी ट्रॉफी विनर्स होते हैं वो और रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी पूरे जो भारत का देश है उसके साथ। तो इस बार के रणजी ट्रॉफी चैंपियंस है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र खेल रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। तो पहले मैं आपको टीम बता देता हूँ। सौराष्ट्र की टीम जो है, साई सुदर्शन जो साउथ जोन से खेलते हैं, मयंक अग्रवाल जो भी साउथ जोन से खेलते हैं यानी कर्नाटका से खेलते हैं, साई सुदर्शन तमिलनाडु से खेलते हैं, हनुमा विहारी ये आंध्रा से खेल, फिर श्रीकर भरत है ये भी आंध्रा से है, शम्स मुलानी, सौरभ कुमार, पुलकित नारंग, नवदीप सैनी और विद्वत कवेरप्पा। और जहां कभी कभी प्लेयर आते जाते हैं, हार्दिक देसाई है, चेतेश्वर पुजारा है, चिराग जानी, अर्पित वसवड़ा, शेल्डन जैक्सन, प्रेरक मनकर, समर्थ व्यास, जयदेव। और जैसे कि हम हमेशा होता है भारत में, जब भी आप टॉस जीतते हैं टेस्ट मैच में, आप क्या करते हैं? आप बल्लेबाजी करते हैं और वही बिल्कुल किया यहाँ पर। लेकिन मुझे मिडिल स्टंप पर और मन्याला प्रणीत कुछ अलग करना चाह रहे थे। वो कहते हैं ना, आप मिडिल ओवर्स में एक कोई तो आप गेंद चुनते हैं जहां पर आप रिस्क ले सके, और वही कर रहे थे मन्याला प्रणीत, क्योंकि पिछले ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए थे, तो उन्हें इस ओवर में थोड़े रन्स चाहिए थे, तो अक्रॉस गए और उसे पैडल करने का प्रयास किया और वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी युवराज को एक अच्छी साझेदारी मैं मान सकता हूं, क्योंकि पहली विकेट के लिए साझेदारी 21 थी और दूसरे विकेट के लिए साझेदारी 40, लेकिन वो जो 40 उसी की वजह से मन्याला प्रणीत ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम जो है अर्जित कर ले, लेकिन यहाँ पर सौरभ शेखर को सफलता, विकेट के नुकसान पर। चलिए वापस रुख करते हैं सौराष्ट्र की तरफ, क्योंकि राजकोट में ये मैच हो रहा है, सौराष्ट्र वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। न्यूजीलैंड में रहते हैं तो वहां पर आप पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वहां पर बैटिंग बेहतर होती जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में 50-50 होता है, कोई कोई जगह पे आप बॉलिंग फर्स्ट करते, कोई कोई जगह पे आप बैटिंग फर्स्ट ही करते। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एक 69 रनों की साझेदारी के बाद, सलामी साझेदारी के बाद, या भारत के लिए हो या फिर कहीं पे भी हो, उनके नाम पे एक अच्छा स्कोर रहेगा, यानी 30 और 40 के बीच में या 50 के बीच में, और फिर उनका विकेट जाता इसलिए है। फिर उसके बाद एक और 69 रनों की साझेदारी और हनुमा विहारी भी आउट हो गए, एक बार फिर से स्टार्ट लेकर आउट हुए 33 रन बनाकर। और फिर खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं जो भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो है साई सुदर्शन। इंडियन T20 लीग में भी बेहतरीन फॉर्म में थे और उसके बाद तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उन्होंने वो फॉर्म जारी रखा। एंड आई बी वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि अभी जो आने वाली है, अभी भारत का डोमेस्टिक सीजन चालू होगा। ये डोमेस्टिक सीजन चालू नहीं है, ये सिर्फ एक T20 ट्रॉफी आएगी, और क्योंकि विश्व कप है जून में वेस्ट इंडीज में, मैं वहां पर देखना चाहूंगा कि क्या सबसे पहले क्या रोहित शर्मा उस टीम में रहने वाले हैं। अगर रोहित शर्मा उस टीम का नहीं, उसमें साई सुदर्शन एक बहुत बड़ा नाम है, वो 72 रन बनाकर आउट हो गए, तो ये बहुत बड़ा विकेट है। और अभी गिरा है, कुछ 10-15 मिनट पहले ही गिरा है साई सुदर्शन का विकेट, तो ये एक बड़ा विकेट मैं मानूंगा। लेकिन अदरवाइज जो भी रन रेट जो है वो 3 के नीचे, 60.3 ओवर में 166, 3 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल, आगे जाकर आपको लगता है कोई कमबैक, या फिर दोनों टीम्स को देखकर कोई ऐसा प्लेयर है जो कमबैक कर सकता है भारतीय टीम में? या तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हैं आप आना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक माइंडसेट होता है ना फील्डर का कि मैं खेल रहा हूं और उसमें मैं खुश हूं। इफ यू आर कंटेन्ड विद वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, you don't want to achieve anything more, because everything you get day by day is an achievement for you. But if you are into a zone where you always keep on constantly dreaming and thinking and working in the way of getting into the national team, you try out different things, you try out your luck as well, and you work on your work ethics. Suraj Khan has been in the news
for right and wrong reasons. There is Sorry to interrupt you. You feel has he been wronged by the selection committee? it will be it will be a wrong thing to pass a comment on that matter, because What I mean to say is, do you feel that it is justified that he's not there? Because I don't think he's not there because of his form. He's not there because of his disciplinary issues. So in that way, do you feel he's responsible? See, I will rule out the discipline thing straight out of the reasons. It is not the disciplinary issues that he has kept out of the international squad. I mean, some grudges are unseen for spectators. Now, since we are connected to cricket, but for someone which is opaque, The reason why I ask that is, it is not limited only to India. Now, if I'm not wrong, Sarfaraz Khan plays for Delhi, and you have David Warner. Still, he doesn't get a place in that playing level. And I don't know whether Ricky Ponting is influenced by what is happening in India. Because do the Indian captains go and have a word with the foreign coaches? But he doesn't go ahead of playing this domestic cricket. The only teams that he plays for is now he's given a chance in the Irani Trophy. Otherwise, he'll be there in the Ranji Trophy and in the Syed Mushtaq Ali Trophy, and of course the Indian T20 League. But apart from that, Indian T20 League, he'll be there in the squad, but he'll not be there in the playing 11 for long. The only time we'll get some chances where some injuries happen, or where anything. Forget sports. Or how are you in a position to portray me to the world? Yep. How can you color me? How can you justify my skill, or how can you justify my appearance as a sports person or as a person in general? Now, that is a cheeky single, but that's a direct throw, and they've gone up for an appeal. Is it out or is it no? I think he's just asking someone in the dugout, and I don't think anyone in the dugout would be in a good position apart from the third. Oh, that's out! And that's out! And that's out. The third wicket going down here. That is so sad. Do you require some cheeky singles right there when you are getting those runs for granted? You never ever want those dangers. You did not want that. So the 20 minutes break can be forgotten, but you cannot forget this wicket which has gone down, and a set batter in the form of Yara Sandeep goes down, and that is a cruel single to be taken, and that's an end to Sandy's innings, as the name is printed on his t-shirt. But that was presence of mind from the fielder at short third, and he just cleared off that 1 inch thick line in order to save your wicket. But that is not to be. Ricky Bui has a new partner now, Yara Sandeep. Now that was a flighted delivery, play just nudged towards the short third region, and off they go, and off he goes out. That straight into the hands, and then before he could complete, and see the presence of mind from the keeper. He just saw the alignment of the ball going towards the stumps, and it hit them. It was out. I remember Ravindra Jadeja just pulling his hand right off the throw. And how many times has MS Dhoni done this? Seriously, I mean, what a judgment of that line of that throw coming towards the stumps. Panniti, or it is Pattini. It is Panniti or Pattini. It is Pinniti Tapaswi, who has come to the crease to join his captain, and his captain now would just like to continue what the top order has left in the basket. Unattended 64 runs for 3 wickets. Towards the start of the second half of the first innings, it's very dangerous, because those halfway marks sometimes bring in a very black relaxation into your body and your mind. Because you have done 10 overs hard work, but then after every over you tell to yourself, no, one more over, one more over, one more over. I used to tease one of my friends whose favorite bowler was Ashish Nehra, and the way Ashish Nehra sir used to just bowl those 3 overs in the over. I always felt that he was about to ask the captain, अच्छा और 3 करने नहीं यार नहीं कर सकता. Then everybody used to pump him up. Come on, Nehra ji, और 3 गेंदे. So here, as a batter, I mean, jokes apart, but what happens here is sometimes that complacency creeps into your mind when you approach a 10 overs mark, and
Thanks to the score, now these batters are not T4 at the end of 6 overs, having lost only 1 wicket. Then, towards the end of 10 overs, you've only managed 13 more runs, and that is not acceptable. 14 runs with a single towards the deep third now. Ricky Bhui and Pinniti Tapaswi have to reach those 10 overs. Play a T10 game, you have 7 wickets in hand. Even if you do not succeed in the first, say, 6-8 balls, you are never in a good shape anyways. So that is not going to mind. Yara, oh Yara, Milna. Because that run out changed the entire. At the end of the power play, that means they have not even scored at 4 runs per over in these remaining few balls, and that is going to get some pressure. And now there you go, very ordinary shot from someone whose Can we name surname that means as a nothing sage. shot? Yeah, absolutely, because his surname indicates penance. And that shot doesn't come after a penance. It is a length ball without moving his feet. He's just swung across the line. And very ordinary shot. It's okay. You need to counter attack. I understand that you have got more than one ball. But in the previous delivery, now it's happened. A length ball outside the off stump. Tapaswi comes down the track, looks to go inside out, gets consumed by the extra bounce. The ball nips in, takes the outside edge, and the keeper back to the dressing room. And in a tries, Andhra, after a solid position, are just now losing their way. They were 68 for 4. That means they have lost 3 wickets for 7 runs in 17 balls. And this is a fantastic comeback. 69 for 4, beg your pardon. So they have lost 3 wickets for 8 runs. 8 runs in 17 balls, and Ricky Bhui, we are not sure whether it's going to be defended. So there is pressure on Andhra, but it is self-induced pressure. I can understand Manyala Pranit getting out. Very ordinary batting from Pininti Tapaswi. There is no need to play that shot just when you have lost a wicket, just in over. You expect a lot of talent from a youngster, but how you mature from a boy to a man is these kind of shots. Having said that, the likes of Glenn Maxwell and Yusuf Pathan also play these kind of shots, whether they are 20 or whether they are 30. Is this the way you're going to play? And this answer would be yes. Something take his while. Best example is Rohit Sharma. He will bat at a strike rate of 50 for the first 2 overs or first 10 overs, and then suddenly he will take that strike 4 chances or 60 chances, depending on what format is it, to get a batter out. But once a batter gets out, he doesn't get another chance in the same game to make amends. Because suddenly a wicket fell and blabbering. Meanwhile, a googly and over the bowler for a boundary by Ricky Bhui. May at least for the next 3-4 overs be a little bit circumspect. Now this is a very safe shot to hit, unless until you are Glenn Maxwell and you can catch no, just a single good fielding placement by the captain. I thought the sweeper covers very square. So yes, going back to that Irani Trophy match, and now another wicket has fallen down. We were talking about Sarfaraz 25, so clearly he was not in his zone when he was batting, because this is not the way he bats. When he bats fluently, and even the great Ricky Ponting has, and that's why I don't understand this talk loads and loads about Sarfaraz Khan, but he will not pick him in the playing 11. And he's not even an overseas batter, as we can give an excuse that their batting looks a little bit thin because they are down to number 6. Yash Dul and Srikar Bharat are batting, and after that it's all the bowlers who can bat. The all-rounders in Shams Mulani, Saurabh Kumar and Pulkit Narang, and if this partnership is broken, this partnership between Yash Dul and Srikar Bharat, they are a difficult task for you as a bowling side to bounce back. And just to finish my topic and get Swapnil in, just look at the bowling options. Jaydev Unadkat, he's now a maestro. At least in domestic cricket, 9 overs, 2 maidens, none for 16. Chirag Jani, 4 overs, none for 10. And these are the faster bowlers. And it did not take Jaydev Unadkat long to realize that this is a pitch for the spinners. And he got on Dharmendra Singh Jadeja. Now my 33. And I'm looking at Ravindra Jadeja. And Ravindra Jadeja, I don't see him playing the 2027 World Cup. If you see, you can counter me, for Ravindra Jadeja, because I know India are looking at Akshar Patel, but Akshar Patel has not quite proved himself with the wide ball as he has proved himself with his role today. So far, he has picked up 2 wickets in this particular match. Then Prerak Mankad, of course, he's bowled just 2 overs. Yuvraj Singh Dodia, another spinner, 11 overs, 37. While Parth Bhatt, another left-arm spinner, 17 overs,
2 for 36. Now, my problem here is we talked about Sarfaraz Khan. Do you see any? Oh dear, another one is gone. Well, Parth Bhatt gets his third wicket now, and Yash Dhul has been caught behind, giving a catch to Sheldon Jackson, the wicket keeper. And rest of India would well be bowled out under 250, and that is a massive disadvantage, especially after you have elected to bat first. Yes, now eventually the podium is 4 wickets have lost. Yeah, 138 for 1 and to the blue. I think about Hanuma Vihari sometimes, but the age factor comes into as a barrier. I mean the youngsters. I mean, so for youngsters, example, there is I see Yash Dhul. Okay. He has captained the junior side well Under 19, and I seriously support the likes of Srikar Bharat, but then you have to just give him that enough chances. If you're thinking about keepers, then you're playing amongst 2.5 keepers already. I count one as he shall return. It'll be 3 or 3.5 with Sanju Samson, just that corner guy. And you think about him sometimes, and if you don't think about him at all, then the fourth name would be Srikar Bharat, but only with a red ball. You're not going to give him, because there are likes of Dhruv Jurel also. Yeah, Dhruv Jurel making a strong contendership for that position, but then it is going to be a tough task ahead of the selectors. Reason by Ricky Bui, and now he's understood. मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ और मुझे करना ही होगा क्योंकि मैंने यारा संदीप को आउट कर दिया है, रन आउट. Likes of Yash Dhul or say Sarfaraz Khan, I really want to see him perform well in the international circuit, because he's got enough of the runs to make him an elite positioned player in the domestic region. Now you cannot just go on testing a guy. I mean, I remember a guy named Amol Mujumdar. Yep. I mean, tons, and sometimes you play in the wrong era, they say. Sometimes you play in the wrong years of, but what's the point of blaming a person without giving him a chance to play for international side? Now you have to test them. Now Sarfaraz can cook people who might be less deserving or might have got a lesser domestic experience. You cannot selection that statement which is underlined on basis of that tournament. You get selected for a 50-over match. Then what's the point of hosting all this Irani? Scrub it off. Absolutely, because you cannot have and this is not the case only with India. This happens in other countries also, where people are selected because they play well in the Big Bash or play well in the South Africa T20 league, and then they get I generally feel, what I feel is the image that Sarfaraz Khan has created in his teens, days where we work in, have played with Sarfaraz Khan, and we have heard stories where Sarfaraz Khan was very mischievous. In then coach, I don't quite remember his name, but said, if this is the discipline that you're going to show, I will not have you in my squad. And he had to go and play from, I think, Bengal or somewhere it is. He had to go, and now he's come back. But as they say, it takes years to build an impression, and it takes just one small incident to crush that impression. Once that impression is crushed, you get a bad impression. It takes again years and years for that impression to be created. So my thinking is, Sarfaraz Khan is not in the team, not because of his poor run of forms or anything. I think we would be foolish enough to ignore that he's got tons and tons of runs in domestic cricket. It is something else. It might be personal, but it might be personal. But if it had been personal, it would have been for one person. So, for example, I can give you this instance from 2016. Virat Kohli made an open statement that I will not have Sarfaraz Khan in my team because he's a poor fielder. He didn't even say poor fielder, he said he's a lazy fielder. And he played in just one game in that entire seat, and he preferred Sachin Baby over Sarfaraz Khan. And ever since, Virat Kohli doesn't want to invite him. So I can understand Virat Kohli's point of view. But what about very bad impression in terms of his behavior? And it might go a long way. But talking about other youngsters, Sai Sudarshan, Sarfaraz, Yash Dhul, yes, you are 100% correct in that. Now, talking from the bowling aspect, Dharmendra Singh Jadeja is not exactly young, but he can be someone who can be looked forward to. And the rest of India, they have benched Dhruv Jurel for this game. I think they should have played him
for this game, because even if it had not been, there's no rule which states that you cannot have two keepers in the side. You can definitely have, you can have it. And when you have players, so for example, I can see the bench of rest of India. Dhruv Jurel, excellent form in the Indian T20 league. Akash Deep, an upcoming youngster. You have Yash Dayal, who actually after the Rinku Singh incident was left up. Yeah, Yash Dayal, who was hit for 29 runs in 1 over by Rinku Singh. Mentally. So these are the guys that you should be playing. Sometimes we focus more on winning games than actually looking at the future, and which is where I think the selection committee can be a little bit more enterprising. Yes, Prithvi Shaw coming to the side. Prithvi Shaw was just picked, and yes, he dropped a couple of catches, and after that now Prithvi Shaw has become almost, he was compared to the next Sachin Tendulkar, whatever be the case. The point is, these are the matches that you can give chance, you can give them exposure, because you've got the experienced guys. And I think now India should start, or not India, I mean the domestic circuit should start looking past Mayank Agarwal, because he's been given way too many chances. Even in the recent Karnataka Premier League, he was not at his best. It's not the Karnataka, whatever happens in Karnataka. But yes, these are some things which the Indian think tank can look to, because at the end of the day, game or an Irani Trophy game or what cricket day, there is barely any cricket happening. What do you say, the Irani Trophy and women, these are the only matches. And of course, the Asian got 170 with the bat, and then they bowled out their opponent for 60 or 70 odd. And there was this match, I think, which Ayush pointed out to me in the women. Nepal had scored 210 or something, and the other team had bowled out for 36 or something like that. And you don't want to see these kind of matches. People who are watching it kind of start getting bored, because one team is scoring 200 plus and the other team is not even scoring half of those runs. Into the bowling all-rounders, and everything now depends on the calm-headed Srikar Bharat. Meanwhile, back to the match that we are covering. Down bowler's name is Atul Singh Surwar, and the first 4 balls he gave just a run, but the 5th ball, use of the field by Ricky Bhui, and he smashed it straight back and well over his leap, and that's a boundary down to long off. Final delivery of the 14th over then, and it seemed like we have been speaking for ages, because we have not taken a break for 7 overs. Swapnil, do you believe that? So everybody knows now that it is we both who are there in the combox. India should look upon a strategy where you just cannot drop a fella who is 23 years of age now. His name is Prithvi Shaw. You gave him a chance when he was 18, 19. And then you had him around for a couple of years in the test arena. Then you gave him a chance in 2020 when he made a debut in ODI. And see, even if they're surrounded by, say, if you're playing in a team like a Mumbai team, where your bowling coach is Paras Mahambre, or your legacy says that you have Sairaj Bautules, and you have Vinod Kamlis, and you have the Tendulkars, and you have the Manjrekars, you have the Mujumdars, the Jatin Paranspes, Amit Pagneses. Forget all that thing. I think if I'm a child, I'll be able to grab whatever comes my way. If I tend to follow a Tendulkar at the age of 17, I lose what I am doing. I neither reach, say, I'm neither Tendulkar nor am I Prithvi Shaw now. Where do I go from here? And I have to walk all those miles again, getting back to my stance where it all started. But Prithvi Shaw, you don't expect him to get matured at 18 when you're playing a cricket. I mean, when you're shaping up your career in the domestic region. You pull him and you give him the blue t-shirt, wherein there's a player at 18, you make a debut, and by 23, irrespective of whatever reasons have happened in your life, you're not a part of any team. Where BCCI says, example, the board committee says that we have 3 teams that can play all around the globe on the same day against any team, and you don't have one of the prominent members of the young brigade that you're developing. That fantabulous knock that he had in that Majors Cup, in that England Cup, Royal Cup, the Royal Cup, he scored a double ton. I mean, forget that. Doesn't he have the skill to survive in the international career? Yes, he has. He has shown. That is the reason why you picked him on that Australia tour, didn't you? So you took him there. He failed. Okay. And bring the bowlers, it will be a nightmare for even Dale Steyn and for any of those Hazelwoods and Trent Bolts
They'll not till say 25. You give him chances. At 25, if he is ending playing a county match and telling his mind that this is my career, where I travel the world and I play the leagues which are not going to count against my career in for the rest of my life, then for him money will only be the primary thing, and there cricket is dead for him. If you're not making it to your national side, in spite of all those good knocks that you can understand, he's come from an injury. You need to understand, he's come from an injury. Again, I'm not targeting KL Rahul. I'm just giving an example. Yesterday, last night, I had a discussion with my friend. He's like, I'm not detouring. If I'm detouring from the topic, just bring me back, because I have this habit of going hairy. But I thought I would ask him a question. Give me your best 11 from Kuldeep Yadav रहेगा, हो गया 4. मिला 40 ओवर हो गए, आगे. मिला then हार्दिक पांड्या, मिला 45 ओवर हो गए, आगे. जडेजा रहेगा, मिला 50 ओवर हो गए, आगे. फिर 6 जन हो गए. Then रोहित शर्मा, गिल, KL Rahul and Virat Kohli. मिला good. Then I asked him, if I want to play Shardul Thakur, that X factor, there was Dinesh Mongia in 2003, there was somebody else in 2000. Okay, I'm good with Shardul Thakur giving 70 runs in 10 overs, but as far as he's taking 4 wickets, 4 good wickets, if he's got not more than 25 in 5 overs, I can make up for that. If Hardik, Jadeja and Shardul Thakur, but whom will you replace? The straight answer came, I'll replace Ravindra Jadeja. And I was taken aback. But I mean, if you want him to bowl 10 overs, you're replacing the same guy. Yes. I'll mind, मैं किसी से भी bowling करा लूँगा. Why Jadeja? Why not KL Rahul? He specialist keeper. You're getting a left-hander in your team. Playing South Africa or Australia, those 70 for 4 would not mean anything, because by the time he's got 4, there's Maxwell who's a 5th, and he's not got Maxwell. And then you're ending up with 380, 390 on the board. It's impossible against a bowling line of Starks and Hazelwoods and Pat Cummins to chase those. Not impossible, but difficult. Here, what the point is, have you not left a chance to nurture Prithvi Shaw? Had he not gone to that county, if we would have been a part of that Indian squad, some Indian squad with Ruturaj Gaikwads and all those stuffs, was he that bad for a skill? He would have got a chance somewhere. He would have proved his mettle, and he would have been in the right scheme of things to get back into the national team. The thing which is very dangerous in this international circuit is the feeling that creeps into your mind of being left out. And this is where communication plays a part. So you have not, why are you even going to Prithvi Shaw? Has anyone communicated to Unmukh Chand? Who communicated to Unmukh Chand that your Indian career is over? What a topic, man. So now I don't know. Meanwhile, Ricky Pui slapped it over cover. The fielder raced across to his right, got a hand to it, pulled the ball back in, but then the naughty ball just went back. And I'm very happy that Swapnil got this out because of Prithvi Shaw. Right from the time he's been talking about Prithvi Shaw, that name of Unmukh Chand has been going around in my mind, and another name has been going around in my mind. And I'm very happy that he pointed out that you are playing for your country and you don't know what is your future. Now that is a very, very, very difficult situation to be in. So I'll start off with Unmukh Chand, a World Cup winner, an under-19 World Cup winner. I'm quitting my career for going for England, India, and I'm going to, I think, Canada, if I'm not wrong, or USA. Yes, USA. He's gone to USA to try and resurrect his career. Is that what cricket has been? Now I'll shift from Unmukh Chand to Shikhar Dhawan. No, before you go on. Yeah. One of the websites, it reads what a sorry statement it is. If you could make out a sorry word, Unmukh Chand born 26th March 1990. Very disheartening. At 30, when you say players are fit at 38 and 39, to just say that I'll be continuing till the 2025 Champions Trophy to get myself into a zone of retirement sort of things. You see a player aged 30 having all the caliber. Because in one of his interviews, I found this statement very offensive. He said, I don't see myself playing for India, and hence I am shifting to the USA. Now, this is where I have a problem. Unfortunately, today's Indian team can be compared to the Australian team of the 2000s. Imagine a player like Brad Hodge was left out of the Australian national team. Why? Because there is no option. Whom are you going to drop from that lineup which had Matthew Hayden, Justin Langer, Michael Clark, Ricky Ponting, Damien Martin?
my country, but your focus cannot be of playing for your country. But again, communication. Was Unmukh Chand communicative with his selectors, and who could have a word with Unmukh Chand saying that, hey kid, listen, you're not 35, wherein you're thinking that you're not going to play for the next 4 years. We don't know where India would be in the next 4 years. We could be the world number 1 team for the next 10 years, or we could just be stripped down from the number 1 team the moment Virat Kohli and Rohit Sharma retire. You never know, because now India are dominant, maybe because you have the experienced heads of Kohli, Rohit and Bumrah marshalling the side. What happened to the great Australian side? 3-4 players retired at the same time, and then suddenly that looked like an under-19 side. So there is one communication example. Second, you plan for the next World Cup at the previous World Cup. So 2019, Shikhar Dhawan was a part of the ODI side. 2020, when India toured Australia after the COVID out, and now he's not even a part of the World Cup squad. Fine, it's okay. But has any of the selectors gone and communicated with Shikhar Dhawan, given him one last chance to end his career on a high, with giving him the information that, sorry Shikhar, you have done a lot for India and we respect that, but I think it's time to move on. We look towards the future, and we have got your replacement. We have got Shubman Gill, and there is no qualms in that. But have you communicated that to Shikhar Dhawan? So these are the things. Similarly, now with Prithvi Shaw, why was he even allowed to go to England? Why should we allow our resources to go to some other country? You make them play over here. Yes, if you are going to play in England conditions, in English conditions, because you feel there it is more professional. Every day you get that X amount of money, and you earn quite a lot in those 4 months time, and you don't even want to come back to India because here the system is not that great. So ताली एक हाथ से नहीं बजती. Couple of things. First about Shikhar Dhawan. Sorry, I have just cut you short. You continue that. But Shikhar Dhawan, one of the prominent big stage. Then second about Prithvi Shaw. If he's playing in England, I want to see him as an opener when India travels to England. In all the 5 test matches that India go there and play 5 top in the playing 11. Are you going to do that? No. If you're not going to do that, guys, go and tell him, come back, play these circuits. I stress on the point. See, I can be a small person. I might not have that vision, but here, for the time being, the boundary in the second ball is being clubbed over the extra cover region for a 6. And back-to-back sixes, is it? Yeah, back-to-back sixes. So, couple of deliveries and 12 runs of it. 1, 2, 3 for 4 was the score after 16. 1, 3, 5 for 4 is the score after 16.2. Coming back to that topic where even players like Nitish Rana are waiting in that queue. Come on. Yeah. I know. I just want to make a statement before I have that habit of touching all the topics, and then people. I have a good person sitting next to me who completes all my essays, saying, "Swapnil, let's start the topic, and I'll complete." So the first topic is the easiest way to now get into an Indian team after the retirement. I'm not expecting them to retire, but one fine day they have to hang their boots. Virat Kohli, Rohit Sharma, and a few more who might take up that decision. You might even have a shocking decision from Hardik Pandya as well in one of the formats. And now coming back, if you want to get into the Indian team, you have to have that captaincy skills in you. Yep. You can get in. Captaincy skills 90%, batting 10%. You are in for that contendership, and so many captains contenders are there. There's Shreyas Iyer, there is Hardik Pandya. Of course, Hardik Pandya is the next almost. But Shreyas Iyer can be a good leader. Even down the line, say 7-8 years from now, you can have Shubman Gill as one of your don't captains. forget the man who's not in the playing 11 for 6 months. Rishabh Pant is there waiting कि भाई मैं वो ताज तो मेरे पास है, तुम लोग किधर घूम रहे हो. ये सब हैं जो चीजें चल रही हैं. तो नीतीश राणा एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं आपकी टीम के लिए. एक लेफ्ट हैंडर भी है, कैप्टनसी स्किल्स भी, एक फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं. तो एक मैं चाहता हूं ना कि अब आपको जरूरत है ना एक युवराज सिंह जैसे प्लेयर की, कि वो कहेंगे कि 5 पे बैटिंग करनी है तो 5 पे जाके मैं 30 बॉल में 70 मार के आऊंगा. अगर 7 पे बैटिंग करनी है तो 7 में कितने बॉल बचे हैं मुझे बताइए, कितने आदमी थे. लेकिन मेरे हिसाब से वो प्लेयर्स हैं भारत के पास, बिकॉज युवराज सिंह एक स्पेशल कैलिबर है, नो डाउट. बट
अगर आपके पास एक युवराज सिंह की जगह पे 2 सुरेश रैना आ जाते हैं तो इट इज तो इसलिए आप आज अगर आप भारत की पूरी जो भी आप लीग्स खेल रहे हैं अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे T20 ऑप्शंस हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो चेतेश्वर पुजारा जैसा हो, जो लंबी पारी खेले, डट कर खेले, क्योंकि हर बार आपको फ्लैट ट्रैक्स नहीं मिलने वाले। अभी एक टाइम पर हम कहते थे कि इंग्लैंड, आज भी मैं कहता हूं कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं, क्योंकि आप उन्हें चैलेंजिंग कंडीशंस दे। आपने एक मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जब बारिश आई थी तो वही जैक क्रॉली और बेन डकेट जो थे, थोड़ी सी मूवमेंट हुई गेंद में और वो आउट हो गए। और वही होने वाला है मेरे हिसाब से, खास करके जब अब भारत भी बल्लेबाजी कर रही है, अगर चैलेंजिंग कंडीशंस होंगे तो आप कहां पे मुड़ेंगे? आप शुभमन गिल की तरफ मुड़ेंगे, आप विराट कोहली की तरफ मुड़ेंगे। अगर ये 2 आउट हो गए फिर आपके पास कोई बल्लेबाजी नहीं बचता, क्योंकि फिर वही ईशान किशन आप देखेंगे कि वो तड़प रहे हैं यहाँ पर गेंद पर बल्ला डालने के लिए वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से भारत के पास वो ऑप्शंस हैं जहां पर आप किसी भी प्लेयर को कहीं पे भी डाल दीजिए, एज लॉन्ग एज इज अ फ्लैट ट्रैक। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप एक लीग खेलते हैं, इंडियन T20 लीग, उस लीग के बेसिस पर जो वो कहते हैं लास्ट मिनट जो आया एकदम आउट ऑफ सिलेबस, उस लीग में अगर मान लीजिए ध्रुव जुरेल आपका लीडिंग रन गेटर हुआ, आपने बस ध्रुव जुरेल को फास्ट ट्रैक कर दिया सीधा नेशनल स्क्वाड में। ये सेम किया था आपने वेंकटेश अय्यर के साथ 2021-22 में, सेम किया था वरुण चक्रवर्ती के साथ, जस्ट बिकॉज उन्होंने मिडिल ईस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी। इट इज फाइन, आप ऐसे करें, लेकिन आप उन प्लेयर्स के साथ परसिस्ट भी तो करें। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वेंकटेश अय्यर मतलब आप इनफैक्ट मैं सचिन तेंदुलकर को भी लूंगा, क्या उन्होंने हर सीरीज में रन स्कोर किए? नहीं ना। उन्होंने उनकी लाइफ में भी ऐसे मोड आए हैं जहां पर वो रन ही नहीं बना रहे थे। 1999 से लेकर 2001 तक वो रन ही नहीं बना रहे थे, फिर भी आपने उनके साथ परसिस्ट किया। ऐसे ही अगर आप किसी प्लेयर को ले रहे हैं नेशनल टीम में, तो आपका काम है उनके साथ परसिस्ट करना। मजाक नहीं है ये कि आपने एक प्लेयर को ले लिया, 2 सीरीज खिला दिया, फिर बिठा दिया। एक टाइम पे कृणाल पांड्या आपके लिए खेल रहे थे नेशनल टीम में, फिर आपने कृणाल पांड्या को बाहर निकाल दिया। तो हाउ डज अ प्लेयर इवन गेट टू नो कि आज मैं किधर खेल रहा हूँ? ये तो हमारे रोस्टर जैसा हो गया। आज मैं इंडिया मैच कर रहा हूँ, कल मैं वर्ल्ड कप मैच कर रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद मुझे ECS करना पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। और ऐसे टाइम पर एक खिलाड़ी को वो थोड़ा, मैं कहूंगा, मानसिक दबाव जरूर होता है, क्योंकि बात ये नहीं कि आप प्लेइंग लाइन में हो या नहीं, बात ये है कि आपको दूध में से आप मक्खी निकालते हो ना, वैसे आप प्लेयर्स को निकाल रहे हो और शक्कर की तरह उन्हें ऐड कर रहे हो। अच्छा, आपने ये साल इंडियन T20 लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं आपको ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 महीने बाद ये इंजरी से वापस आ गए हैं, तो अभी आपको जाना पड़ेगा। और ऐसे जाना पड़ेगा कि वापस आपको चांस ही नहीं है। ये थोड़ी बहुत मतलब मुझे लगता है नाइंसाफी है। और एक बड़ी न्यूज में बताना चाहूंगा, ये था रीजन जो 20 मिनट का वो एक ब्रेक था। तो हुआ ये था कि इनिशियल प्लेइंग 11, जो ओरिजिनल प्लेइंग 11 अनाउंस किया था झारखंड ने, उसमें सौरभ तिवारी नहीं थे, और उसके बाद टॉस के बाद उन्हें ऐड किया गया, लेकिन अंपायर्स को यह बताया नहीं गया कि सौरभ तिवारी जो है प्लेइंग लाइन में है। वो एक अंपायर ने, किसी ने तो स्पॉट किया 1 ओवर के बाद, और शायद अब सौरभ तिवारी दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं तो शायद उन्हें पहचानना भी आसान होगा, क्योंकि अभी कल मैं स्वप्निल को देखूंगा और मैं देखूंगा अरे स्वप्निल का नाम नहीं है प्लेइंग लाइन में, अचानक से स्वप्निल को मैं फील्डिंग करते देखूंगा, मैं तो नहीं जानता, और ये तो नहीं थे प्लेइंग लाइन में, अब ये फील्डिंग करने की ओर। ऐसे कुछ हुआ, अंपायर ने नोटिस किया कि आपका नाम नहीं था प्लेइंग 11 में, तो आप फील्डिंग क्यों करने आ रहे हैं। तो वो वहां पर मैंने जिस तरह से सौरभ तिवारी का बॉडी लैंग्वेज देखा, उन्हें तो वहां पर बात करना ही नहीं चाहिए था, कप्तान को बात करना चाहिए था। तो यहां पर झारखंड की टीम ने ये गलती की कि उन्होंने अंपायर को ये बताया ही नहीं कि एक लास्ट मिनट चेंज हुआ है और सौरभ तिवारी प्लेइंग लाइन में आ गए हैं। तो अंपायर ने कहा नहीं, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपको सौरभ तिवारी को यहां से निकालना पड़ेगा। और वही कारण है सौरभ तिवारी को निकालना पड़ा है और वापस सब्स्टिट्यूट में ऐड किया है। विकास कुमार को पहले रखा था टीम में, और उनके जगह पर लास्ट मिनट पे सौरभ तिवारी आए और किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। और ये एक अच्छी अंपायरिंग मानता हूँ, क्योंकि आपके पास वो प्लेइंग 11 है, बट आप हर एक को तो देखते नहीं बैठ सकते कि कौन से खिलाड़ी है कौन से खिलाड़ी नहीं है। बट दिस इज गुड कि आपने पहचाना कि सौरभ तिवारी प्लेइंग 11 में नहीं थे इनिशियली, बाद में ऐड किए गए, तो आपने तुरंत भाप लिया कि सौरभ तिवारी जो है वहां पर नहीं होने चाहिए। और
विकास कुमार, जी हाँ, विकास कुमार को ऐड कर दिया वहां पर। वेरी गुड अंपायरिंग, वेरी गुड अंपायरिंग, क्योंकि हम जो कहते हैं ना, शायद हम कमेंटेटर्स भी, हम हाँ अननेसेसरी हम इंडिया का मैच कवर कर रहे हो, हम वहां पर शायद ये कह सकते हैं अरे ये शार्दुल ठाकुर तो नहीं था प्लेइंग में, वो क्या कर रहे, लेकिन एक नॉर्मल जब एक माफ कीजिएगा मैं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ T20 की, लेकिन एक लोकल लीग है ये, तो लोकल लीग में आप प्लेयर्स को कैसे पहचानेगा, और दिस इज जस्ट मैच नंबर 6, यानी आपने प्लेयर्स को उतना देखा भी नहीं है, एक टीम के 2 ही मैच हुए हैं, तीसरा ही मैच हुआ है, तो हैट्स ऑफ टू द अंपायर्स कि उन्होंने ये पकड़ा, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगेन। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इट्स इजियर टू पिक आउट सौरभ तिवारी, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज शॉर्ट हेयर, इन स्पाइट ऑफ हिज शॉर्ट हेयर, बट फिर भी उन्होंने इंडिया के लिए भी खेला है, मुंबई के लिए भी खेला है, तो उन्हें पकड़ना फिर भी आसान है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपका नाम तो नहीं पढ़ा था प्लेइंग 11 में, आप आए कैसे, और आए तो आए, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि लास्ट मिनट चेंजेस अलाउड है, ये जो रूल होता है ना लास्ट मिनट, कभी कभी ऐसा होता है आप टॉस, क्योंकि इसका टॉस जो है ना 1 घंटे पहले हुआ है, 1:15 का मैच था, 12:15 को टॉस हो गया है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसके बाद जो ड्रिल्स हुए रहेंगे, वार्म अप हुए रहेंगे, शायद कोई इंजर्ड हुआ रहेगा और उसके वजह से शायद सौरभ तिवारी को पहले नहीं अनाउंस किया रहेगा, और फिर उसके बाद 12:45 के बाद 1 के आसपास उन्होंने ले लिया रहेगा। लेकिन वो एक रूल होता है, आपको पहले अंपायर को पूछना रहता है, और अंपायर जाके सामने वाले कप्तान से पूछता है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना कि इन्होंने ये प्लेइंग 11 में चेंजेस किया, और अगर सामने वाला कप्तान ने कहा कि नहीं वी डोंट माइंड, तब आप जाकर प्लेयर को ले सकते हैं, ऐसी रैंडमली नहीं ले सकते। लेकिन बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर में एक्चुअली थोड़ी मोमेंटम यहाँ पर मिल रही है आंध्रा को, क्योंकि पिछले कुछ ओवर्स में रन जरूर आ रहे हैं, 17वीं ओवर में 17 रन आए, और यहाँ पर अब 18 ओवर के बाद स्कोर है 150, 4 विकेट के नुकसान पर, और अब ऐसे लग रहा है 175, 180 का लक्ष्य जो है आराम से बन सकता है। World Cup wonders await on Cric. The ICC World Cup 2023 is your ticket to cricketing paradise. Cric invites you to witness the magic unfold as teams from around the globe compete for the ultimate prize. Be prepared for nail-biting finishes, record-breaking performances, and the emergence of new cricketing heroes. Cric extends a warm invitation to cricket enthusiasts worldwide, inviting you to What a catch! What a catch! और रिकी भुई को मानना पड़ेगा, अंपायर चेक करें कि क्या वो कैच लीगल है, लेकिन रिकी भुई जानते हैं कि वो कैच जो है एक अच्छा टीम एफर्ट है, एक शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे पुल कर दिया था डीप मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी आया डीप मिड विकेट से अपने बाएं तरफ, उन्होंने छलांग लगाई, कैच पकड़ा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने के जस्ट पहले उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पास कर दिया जो लॉन्ग ऑन से आ रहे थे अपने दाई तरफ। एक्चुअली वो थ्रो भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ऊपर से फेंका था, लेकिन अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के भी, और भले ही हम ये कहते हैं कि आजकल ये प्रैक्टिस करते हैं काफी ये मुझे फिर से देखना पड़ेगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी वो रोप के बाहर गए हैं, इसका रिप्ले एक्चुअली देखना चाहिए थर्ड अंपायर को, लेकिन पता नहीं ऑलरेडी रिकी भुई बाहर गए हैं, क्योंकि ये भी एक रूल होता है कि आप जो है जब तक बॉल प्ले में है आप रोप के बाहर पहले नहीं जा सकते। क्या यहाँ पर एक गलती जो है वो अननोटिस हुई है, बट पता नहीं, यहाँ पर कैच जाएगा मोहित कुमार के नाम। एक्चुअली मोहित कुमार ने कैच जो है उसका सेकंड हाफ पकड़ा था, जो मेन एफर्ट किया था वो डीप मिड विकेट के फील्डर ने किया था, क्योंकि वो आए थे अपने बाएं तरफ भागकर, फिर उन्होंने देखा कि वो बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने मोहित कुमार को आते हुए देखा लॉन्ग ऑन से, और उनकी तरफ उन्होंने वो बॉल फेंका और छलांग लगाकर मोहित कुमार ने वो कैच लपका। लेकिन मेरा डाउट ये है कि वो बॉल के पास आने से पहले शायद मोहित कुमार जो है रोप के बाहर चले गए थे और फिर अंदर आए, लेकिन अंपायर ने ये देखा नहीं है, और अभी अगर देख भी लेंगे तो आई थिंक देर हो चुकी है। अगर ये बॉल डाला गया फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नए बल्लेबाज ऑलरेडी आ गए हैं। 150 विकेट के नुकसान पर आंध्रा। और यहाँ धीरज कुमार अब नए खिलाड़ी यहाँ पर आ गए हैं। एक अब इस दौरान ऐसे कह सकते हैं कि देखिए इस लेवल पर भी, लेवल मैग्नीट्यूड या फिर क्वालिटी के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ, इस लेवल पर भी इस प्रकार का एक अच्छा खेल देखने मिलता है, क्योंकि क्रिकेट का स्किल है ना, ये लेवल नहीं दिखता। आप अगर आपके खुद के जहाँ पे आप रहते हो उस गली में भी अगर हो तो यहाँ पर ऐसा ही खेल देखने मिलेगा जब आप ऊंची स्तर पर खेल रहे हो। दूसरी विकेट पर दूसरी सफलता, यहाँ पर जो है ये जले पे थोड़ा सा नमक है, क्योंकि सौरभ तिवारी नहीं है, उनकी जगह पर जो खेल रहे हैं
उन्होंने 2 विकेट लिए हैं 2 गेंदों में। और पहली गेंद पर रिकी भुई जो लॉन्ग ऑन या फिर कह सकते हैं काउ कॉर्नर की तरफ आउट हो गए। और यहाँ पर दूसरी गेंद पर जो धीरज कुमार क्लीन बोल्ड खेलना चाहते थे वापस एक बार मिड विकेट की तरफ, थोड़े सेटल नहीं लग रहे थे अपने स्टांस के साथ। अगर आप उन्हें अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर एक सीधी गेंद पर चॉप ऑन कर दिया और क्लीन बोल्ड हो गए। 2 विकेट 2 गेंदों में, मतलब पहली बात विकास कुमार है हैट्रिक पर, 3 विकेट उन्होंने ले लिए हैं यहाँ पर। 2.2 ओवर में 17 रन दिए हैं, 3 विकेट अपने नाम किए हैं। देखते हैं क्या वो हैट्रिक लेते हैं, क्योंकि चांस है, क्योंकि लोअर ऑर्डर अब बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं। यहाँ पर आ गए हैं विजय, और देखते हैं इनके बल्ले से कुछ विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। त्रिपुराना विजय यहाँ पर आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और काफ़ी देर से हम ये देख रहे थे कि स्कोरिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर 2 गेंदों में 2 विकेट और सीधा विकास कुमार ने उनको वापस ला दिया है लेग स्टंप की ओर। पैड्स पर गेंद करेंगे, एकदम हाफ पिच डिलीवरी थी, सिर्फ स्टीयर करना था और उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। अंदर थे खिलाड़ी 30 गज दायरे के, और यहाँ पर एक बाउंड्री मिलती हुई, एक विकेट मिलनी चाहिए थी विकास को हैट्रिक होने के लिए, लेकिन हैट्रिक गेंद आप ऐसी नहीं करते। आप एक तो अवे गोइंग डिलीवरी कीजिए या फिर शॉट कर दीजिए, बैट्समैन को एक अलग जोन में डाल दीजिए, लेकिन ऐसे करेंगे तो हैट्रिक कभी नहीं मिलेगी। 2 गेंदों के सफल प्रयास के बाद एक चौका यहाँ पर लगता हुआ, बिल्कुल 154 6 विकेट के नुकसान पर है आंध्र की टीम, जो पहली ऐसी बल्लेबाजी कर रही है। अच्छी तरीके से स्टार्ट की थी, लेकिन वहां पर एक समाप्ति की जो जोन में आ गए हैं। आखिरी के 8 गेंदें बची हुई हैं, 155 है स्कोर, 180 तक ले जाना है तो 25 और बनाने पड़ेंगे 8 गेंदों में। क्या नीतीश कुमार रेड्डी वो 25 रन बना पाएंगे? एक देखिए, एक अलग एक सेटिस्फैक्शन होता है गेंदबाजों के लिए। अगर आपके बल्लेबाजों ने 180 का एक चरण छू लिया है, वो एक अलग जोन में ले जाता है आपको, क्योंकि 9 रन प्रति ओवर आपको बनाने होंगे। T20 में 9 रन प्रति ओवर मुश्किल नहीं है अगर आपको एक अच्छी स्टार्ट मिलती है, पावर प्ले मिलता है। ये सीधा खेल दिया है, आड़े बल्ले के साथ सीधा साइड स्क्रीन में जाता हुआ ये चौका। 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर यहां पर पहुंच गई है आंध्रा की टीम और नीतीश कुमार रेड्डी। और ऐसी बड़ी शॉट्स खेलने की दरकार आपके कप्तान और आपके डगआउट से जरूर होती होगी, लेकिन आप संयम रखें और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। अब यहां पर थोड़ी सी जो सोच में है ना, वो मुश्किल आती भी होगी। क्या अब सिंगल लेंगे और स्ट्राइक रखेंगे 20वीं ओवर की, या एक बड़ा शॉट खेल के वो सोचेंगे कि मेरे पार्टनर के ऊपर मैं भरोसा दिखाता हूं। यहां पर देखिए, बहुत ही अच्छी गेंद थी, दिशा अच्छी थी, एंगल अंदर लाना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ बल्लेबाज का, और सिंगल यहां पर एक मिलता हुआ ओवर समाप्त लेग बाय के साथ। 160 6 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर के बाद आंध्रा। Cric, where cricket unites the world. The ICC World Cup 2023 is more than a tournament, it's a global phenomenon. Cric connects fans worldwide as we follow the highs and lows, the triumphs and heartaches of this cricketing extravaganza. This tournament transcends boundaries, languages, and cultures. It's a stage where cricket aficionados from all walks of life unite to witness the highs and lows, the jubilant triumphs, and the heartbreaking heartaches. With Cric, you're not just a fan, you're part of a global community that shares the same fervor for the game. Whether you're cheering for your home team, a long-standing favorite, or just reveling in the sheer joy of cricket, Cric connects you to a worldwide network of passionate fans. Share your excitement, engage in discussions, and experience the electric atmosphere of this cricketing extravaganza together. Let's unite in the name of... कैसे यहाँ पर गेम बदलता है, क्योंकि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे चौके छक्के कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, अब विकेट्स पे विकेट्स गिरे जा रहे हैं। और ये काफी टीम्स के साथ होता है, जब वो कहते हैं ना, आप आखिरी ओवर में आते तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, आपको ऐसे लगता है कि हमें हर बॉल पे यहाँ पर चौके छक्के जड़ने हैं। और एक अच्छी प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना रहे थे रिकी भुई,
और नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी साझेदारी भी अच्छी थी, 81 रनों की थी 5वें विकेट की, लेकिन उसके बाद 150 पे 5 थे और अब जो है 150 पे 7 हो गए हैं, 160 पे 7 हो गए, माफ कीजिएगा। तो 10 रनों के अंतराल में उन्होंने 3 विकेट खो दिए हैं और कितने गेंदों में, 7 गेंदों में 10 रन और 3 विकेट, और ये कभी भी अच्छी खबर नहीं होती क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है इस मैच में। 61 पे 1 थे, 59 पे 4, 69 पे 4 हो गए, फिर 150 पे 4 थे, 160 पे 7 हो गए। तो ये जो 2 बार बैटिंग कोलैप्सेस हो गए हैं, यानी आप समझ सकते हैं आप आराम से एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकते थे, 180 190 तक पहुंच सकते थे अगर आपने थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की होती, क्योंकि मनियाला प्रणीत स्टार्ट लेकर आउट हो गए 34, 11 संदीप स्टार्ट लेकर रन आउट हो गए 21, रिकी बुइच उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की 53 रन, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी वो भी अभी अभी स्टार्ट लेकर आउट हुए हैं 36 रन बनाकर। और अब हालत ये है कि 2 नए बल्लेबाज, पोटेंशियली 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, त्रिपुराना विजय और मनीष गोलामारू, और अब नंबर 9 तक आ गए हैं, यानी ये पुछल्ले बल्लेबाज हो गए हैं आंध्रा के लिए। और जब पुछल्ले बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ ये सब होता है, स्विंग एंड मिस सब होने लगता है। और हम जस्ट नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि ये जो हैं वो शायद भारत के लिए नहीं, लेकिन इंडियन T20 लीग में खेले। जी हाँ बिल्कुल, हैदराबाद के लिए इन्होंने खेला है। जो मैं दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर रहा था जिन्होंने डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला था, बट ये वो वाले नीतीश कुमार रेड्डी हैं जो फिलहाल अभी 20 वर्ष के हैं और हैदराबाद के लिए उन्होंने खेला है, बट ज्यादा नहीं खेला क्योंकि सिर्फ 7 T20s हैं उनके नाम। और अभी यहाँ पर वो, और हाल ही में इंडिया ए, पाकिस्तान ए, जो ACC एमर्जिंग अंडर 23 कप पे थे, उन्होंने भी वहां पर भी वो खेले थे, लेकिन फाइनल में नहीं खेले थे क्योंकि इन्होंने पिछले 5 मैचेस में सिर्फ बॉलिंग ही की है, उन्होंने बैटिंग तो की नहीं है। लेकिन इंडियन T20 लीग में जो उनका लास्ट मैच था वो मुंबई के साथ था वानखेड़े पर, और वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी तो नहीं की, लेकिन गेंदबाजी में 3 ओवर में 35 रन उन्होंने दिए थे। और उस टाइम पे वो एक ऐसे खिलाड़ी के सामने थे जिन्होंने उस मैच में अपना शतक जड़ा था, और तभी एक साझेदारी पनप रही थी रोहित शर्मा और कैमरन ग्रीन के बीच में, और तभी कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा था हैदराबाद के लिए। और 200 का लक्ष्य जरूर वो डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वो नहीं डिफेंड कर पाए और मुंबई आराम से वो मैच जो है जीत गई। तो इसलिए मुझे नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो नाम ऐसे स्ट्राइक हो रहा था। इसी बीच गेंद हवे में और कवर के खिलाड़ी के जस्ट वाइड, और जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंच पाते अपने दाई तरफ, और एक मिसफील्ड भी की वहां पर, 2 रन यहाँ पर आंध्रा के नाम। 162 7 विकेट के नुकसान पर आंध्रा। यहाँ पर अभी 180 का लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन 12 रन अगर आखिरी 2 गेंदों पर आ जाएं तो 176 हो सकता है स्कोर, 174 हो सकता है, माफ कीजिए। और यहाँ से आप क्या लेके जाते हो इनिंग्स ब्रेक में? एक आपने अच्छा कमबैक किया, झारखंड की टीम सोचेगी अच्छा कमबैक किया। एक साझेदारी जब पनप रही थी कप्तान रिकी भुई और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, तो लग रहा था कि 200 तक हो जाएगा अगर ये दोनों रहते हैं तो। लेकिन यहाँ से आप अगर नहीं राहुल शुक्ला, आपको स्टंप टू स्टंप करने, आपके सामने ओपनिंग बैटर्स नहीं है, ये जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 5 वाइड्स के लिए गई है, और ये बहुत ही दर्दनाक ये हादसा होता है जब कीपर से भी छूट जाती है। बाउंस ही नहीं हुई, कीपर के ग्लव्स में आई ही नहीं, लेकिन आपने लाइन देखा कहाँ थी? ऑलमोस्ट पिच के बाहर थी। तो ये तो 12 रन होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, और कार्तिक तो बोलेंगे कि ये नो बॉल देनी चाहिए थी। हाँ। और फिर भी जी मनीष गोलामारू जो है अब सामना करेंगे आखिरी 2 गेंदों का। यहाँ पर बिल्कुल ये लाइन होनी चाहिए, स्टंप टू स्टंप लाइन, और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। ये आप करते हैं तो कोई जवाब नहीं होता, और यही कह रहे हैं कि और मैं क्या कर सकता था। त्रिपुराना विजय पूछ रहे हैं कि ढकेल देते हैं ऑफ साइड में कैसे, मतलब बहुत ही अच्छी गेंद थी मेरे लिए। मैं तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने अभी कहा ओपनिंग बैटर तो है नहीं, तो आप स्टंप पे यॉर्कर क्यों नहीं डाल रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका क्या। अब 38 रन तो खर्च कर चुके हैं अपनी 3.5 ओवर में, आखिरी गेंद डाल दें और सुकून पाएं, इतना ही अब इनके हाथ में है राहुल शुक्ला के। देखते हैं आखिरी गेंद पर अगर विकेट ले सकें तो कुछ मामला बने, नहीं तो ये बिल्कुल सीधी गेंद, सीधा खेल दिया है, लेकिन सीधा स्टंप पर,
और एक ही रन के साथ यहां पर संतुष्ट होना होगा। 20 ओवर का खेल समाप्त, 168, 7 विकेट के नुकसान पर आंध्रा की टीम ने यहां पर बहुत ज्यादा कोशिश करके बनाए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या वो ये 169 का जो टारगेट है वो रोक पाएंगे। बैटिंग के बारे में अगर बात करें जी, अश्विन हेबर जल्दी आउट हो गए थे 5 रन बनाकर, और वो विकेट जो है 21 पर गिर गया था। उसके बाद एक साझेदारी पनप रही थी मनियाला प्रणीत और यारा संदीप के बीच में। दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मनियाला प्रणीत ज्यादा करके आक्रामक खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक पीरियड आया पावर प्ले में इनका स्कोर था 6 ओवर 54 के बाद आखिरी अगले 4 ओवर में सिर्फ 15 या 16 रन आए। उसकी वजह से मनियाला प्रणीत जो है अपना विकेट खो बैठे 34 रन बनाकर वो स्टार्ट। उसके बाद एक कोलैप्स हुआ, 61 पर 1 थी आंध्रा की टीम और अचानक से 69 पर 4 हो गई। यारा संदीप रन आउट हो गए एक स्टार्ट लेकर 21 रन बनाकर, और उसके बाद पिनंती तपस्वी एक बहुत ही खराब शॉट खेलकर आउट हो गए 1 रन बनाकर। और फिर एक रिजरेक्शन टाइम आया रिकी भुई और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में। उनकी साझेदारी काफी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने 81 रन जोड़े, 5वें विकेट खेले, और वो जो 81 रन है वो 48 गेंदों में आए, यानी 8 ओवर में आपने 81 रन जोड़े, ऑलमोस्ट 8 रन 10 रन पर ओवर। और रिकी भुई, और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो एक ऐसे मोड में आ गए थे जहां पे उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे हर गेंद पर चौका छक्का तो चाहिए, और सही भी बात है, आप अच्छे लय में लग रहे थे, आपने 53 रन बना लिए थे, लेकिन वो आउट हो गए और फिर से एक बार कोलैप्स हो गया आंध्रा का, क्योंकि 150 पे 4 थे और 160 पे 7 हो गए क्योंकि निचले वाले बल्लेबाज कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। धीरज कुमार पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, फिर नीतीश कुमार रेड्डी वो भी कैच आउट हो गए 36 रन बनाकर, और अंत में जो है वो कहते हैं ना मर के उन्होंने ये 161-68 का यहाँ पर एक लक्ष्य ने एक स्कोर खड़ा किया, क्योंकि 15 ओवर की समाप्ति के बाद इन्होंने 109 रन बना दिए। तो ये जो बीच वाला पीरियड है वो इनके लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि पहले 6 ओवर में 54 रन, कोई विकेट ना, 1 विकेट, और फिर अगले 9 ओवर में 55 रन और 3 विकेट, यानी आपने पावर प्ले में करीब 10 रन, चलिए 9 रन प्रति ओवर के साथ बल्लेबाजी की, और फिर अगले 9 ओवर में आपने 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी की, और आखिरी 5 ओवर में आपने फिर भी चलिए 59 रन जोड़े हैं। वो ज्यादा हो सकते थे, आप 10-15 रन और स्कोर कर सकते थे अगर आपकी वो कोलैप्सिस नहीं हुई होती तो। गेंदबाजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप डेफिनेटली ये मानेंगे कि कमबैक है झारखंड की तरफ से, और ये आप अगर देखते हैं पहले 6 ओवर में थे 6 9 54, फिर था 9 6 54, और फिर 5 9 45, आसपास ही थे 6 9 54, वापस वही। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें, युवराज कुमार 4 ओवर 1 विकेट 45 रन, राहुल शुक्ला 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, सौरभ शेखर 4 ओवर 28 और 1 विकेट उन्होंने लिया, लेकिन रवि यादव की किसी भी विकेट के बिना उन्होंने 23 रन ही दिए अपने 4 ओवर में। अतुल सिंह सुरवर ने 1 ही ओवर किया, 6 ही रन दिए, शायद उन्हें एक और ओवर देना चाहिए था, लेकिन विकास कुमार 3 विकेट लिए, 26 रन दिए 3 ओवर में, और ये था हाल उस बॉलिंग का जिन्होंने रोका आंध्र की टीम को 168, 7 विकेट चटका कर, एक्स्ट्रास केवल 10 दिए, लेकिन वो एक मोमेंटम लेके गई है झारखंड की टीम इस इनिंग्स ब्रेक में, जहां पर वो सोचेगी कि बहुत अच्छी यहां पर हमने गेंदबाजी अंतिम ओवरों में की है। 169 का लक्ष्य पीछा करते हुए कैसी गेंद बल्लेबाजी का एक मायना पेश करेगी झारखंड की टीम, देखते हैं और सुनते हैं इस ब्रेक के उस पार। Thank you for joining us for our live commentary of this thrilling match. As the players take a breather during the mid-innings break, we encourage you to stay right where you are, because the action is far from over. The intensity is about to be cranked up a notch as the teams regroup and strategize for the next phase of the game. But while the players catch their breath, we've got you covered with the latest news and updates from the world of cricket. From player insights to match analyses, we're your go-to source for everything cricket related. So make yourself comfortable, grab your favorite snack, and keep those headphones in, because we're going to keep you entertained and informed throughout the break. When the match resumes, you won't miss a beat. We'll be here to bring you ball-by-ball coverage, expert commentary, and all the excitement that the game has to offer. Thanks for choosing us as your cricket companion. Stay tuned, stay engaged, and get ready for an adrenaline-pumping second half of the match. Are you ready for the cricket event of the decade? The ICC Men's Cricket World Cup 2023 is just around the corner, and we have got something special for all you cricket enthusiasts. The Cric app, your ultimate companion, as you will have access to breaking news, live scores, and exclusive behind-the-scenes content. Follow
your favorite teams, track player stats, and stay updated with in-depth analysis. But that's not all. We are bringing the stadium experience right to your fingertips with live match commentary and in-game highlights. It's going to be legendary. The Caribbean has two personalities. When the sun shines, the music plays. But storms are frequent, the atmosphere can quickly change. In 2007, the defending champions were greeted by headlines of a team in decline, and the mood darkened. And I remember the first press conference we had there, that I got asked the same question by 3 or 4 different journalists, and the only way I answered it, I looked at them, I said, well, you asked me that question in 5 or 6 weeks' time, and see what sort of answer you get. And I just knew that our group would come together well, and that we would play well in those conditions. South Africa, again, felt the full force of their indignation. They are attacking Sean Pollock. They're definitely going to attack Sean Pollock. We're talking about Pollock and how we had to respect him because he was their main bowler and all that, and we got maybe 1 minute into talking about how we're going to play their attack, and remember Hayden and Gilchrist had already got together before the batting meeting, and they stopped us and said, hang on, don't worry about Pollock, we'll take care of him. It's gone again. And it's gone again. India, unthinkably, failed to make it past the group stage, but then neither did Pakistan. What India did have was the sight of a 20-stone policeman from Bermuda in full flight. And taken, what a catch! That's a stunning catch! Who will ever forget Dwayne Leverott? Sensational catch, he's celebrating! There was an even more memorable moment for Ireland in their first World Cup, beating Pakistan and qualifying for the new Super 8 stage. Changed everything about Irish cricket. I think that the position we were in, we needed that. We needed those results and to kind of put ourselves on the map. And I think we did that then, and that was really what's catapulted us to where we are now at the minute. And we're getting more and more support back home and more on the grassroots level, which is what we need if we're going to sustain to where we're at now. So no, it's done everything for Irish cricket. Within just a few hours, that result seemed utterly irrelevant, as Bob Woolmer's death brought the tournament to its knees. The Pakistan coach, much admired and well liked, remains a sad loss to the game. The 18th of March 2007 produced the most unwelcome, tragic news. It was the hardest time, especially that 2 days we are in something, the neutral island or something like that. We are stuck there for two days, and we are very scared about that, because our coaches, we lose our coach, we lose our favorite coach, and then everybody think about that we are involved in these. So it was very, very horrible time, especially for me. The first Super 8 match saw a true World Cup legend, a stadium bearing his name, and a display of awesome power from Matthew Hayden, worthy of the great man. That is big. That's the best of them. That's massive. That's Rose back. Try to taper my training around bowling when those guys are finishing the nets. 158 big runs from Hayden, the Australians with that air of invincibility again. What we have been able to do in World Cups is build it from a low platform at the start of a World Cup and build and make sure at the end of a World Cup that we're actually playing the best cricket that we possibly can. And if you look at our last 4 campaigns, they've all been very much that way. From their World Cup success in 1996, the Sri Lankans had gone on to establish themselves as amongst the favourites for just about every tournament since. The Caribbean pitches suited their game, and the semi-final against New Zealand was another demonstration of their qualities. Tom Modi and Trevor Penny with that management is very good combination. Tom always give confidence to the opening batsman. So we were enjoying our cricket. A century from Mahela Jayawardena and 4 wickets from Muttiah Muralitharan saw the Sri Lankans reach their second World Cup final. Catch it.
He has caught it. Tamara Silva coming across from short fine leg. Muralitharan is on song here. South Africa had come through a pressure game against England to reach another semi-final. But awareness of Australian strengths seemed to confuse their mental approach. And he's bowled in Glenn McGrath. Brilliant start from the Australians. But I think when you look back, they were definitely the best team in the tournament, and maybe we felt that we needed to play, out of our skin to beat them, and maybe that's where we lost our way a bit. After bowling out South Africa for just 149, Michael Clarke and Andrew Simons brought Australia home for the most comfortable of victories and continued a 100% winning record. If there was a weakness, it was well hidden. Andrew Simons wins it for Australia. 28 matches unbeaten in World Cup cricket. Barbados would be the venue for a final which brought together two old foes. Australia had been beaten by Sri Lanka back in 1996, but this had been the most impressive Australian campaign in memory, and they had a captain who could become their first to lift the trophy twice. History in the making. The Hayden-Gilchrist axis had long been their trump card, yet Gilchrist had been unusually quiet, until now. 149 off only 104 balls, overtaking his captain as the highest for any batsman in a World Cup final. And Gilchrist going large. That is a magnificent stroke. It's his third big six of the innings. It was brilliant inning. From the first ball, he's hitting from the middle of the bat. So I felt something, okay, he's going to get something big. But he was totally a failure for the whole tournament. He's somewhere there to get some runs on the board, which he did in the finals against us, unfortunately. Myself and Kumar Sangakkara had it for a longer period, almost 100 runs. It was very good, and unfortunately the weather held it up. Jayasuriya had played in that 96 final, and his talents remained undiminished. But bad weather meant the match would end in almost complete darkness. It was very bizarre, I must admit. The positive that I always keep coming back to out of it was it actually gave us the chance to celebrate twice, because we celebrated once when we thought the game was over, and then we went back out and started again and bowled one more over and then got to celebrate again. So it was a bit of a disappointing, strange sort of end, I guess, to a World Cup tournament. Australia have won the World Cup of 2007. Conditions spoiling a great occasion. For the winners, it barely mattered. For us, it was we didn't care too much about how it ended. It was about how we played right the way through and how good once again. 169 चेस करने आए हैं और सीधे सीधे इम्पैक्ट प्लेयर कौन है? No guesses required. It is Saurabh Tiwari who will start the proceedings for Jharkhand. और ये एक अहम 6 ओवर का खेल होगा. इस खेले में आपको बनाने हैं रन्स, बचाने हैं विकेट, क्योंकि आपको वो दोनों चीजों से परहेज करने लगाएंगे जो बॉलर्स हैं आंध्र की टीम में. वो एक अच्छी लय प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे. यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के सामने कौन है जो गेंदबाजी कर रहे हैं? वो है स्टीफन, और वो भी एक इंपैक्ट करके आए हैं. चाहेंगे वो कि एक अच्छी स्टार्ट मिलाएं. 2 गेंदें बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन की है और इसी का एक अच्छा नज़ारा यहां पर पेश करने की कोशिश जरूर करेंगे. लेकिन जब आप सौरभ तिवारी जैसे होनहार खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपकी लाइन और लेंथ बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी.
और स्टीफन हमेशा से ये चाहेंगे कि एक अच्छी लय में शुरुआत दें। देखिए, पहले 36 गेंदों में आप कितने रन बचाना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा। ये ज़्यादा से ज़्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर झारखंड की टीम कितनी बनानी चाहेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखेंगे कि रिकी भोई जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे अपने बॉलर्स के साथ ऐसी लाइन और लेंथ जो बैटर्स को फोर्स करे उस शॉट प्लेइंग में, और कुछ गलतियां कराने की कोशिश जरूर होगी। यहां पर सिद्दीकी आए हैं अपना एक अलग नज़ारा पेश करने के लिए। बिल्कुल नजीम सिद्दीकी जो कप्तान हैं और वो चाहेंगे कि अपने टीम के लिए सौरभ तिवारी के साथ अच्छी साझेदारी यहाँ पर शुरू करें। 1 रन आ गया है पहली 4 गेंदों में, और स्टीफन ने एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर की है। लय एक अच्छी प्राप्त की है, और वो लय थोड़ी सी लेग स्टंप पर झुकती हुई मिड विकेट की दिशा में। इस पारी का पहला चौका कप्तान नाजिम सिद्दीकी की बैट से, और यही मैं कह रहा था कि आप बाएं हाथ के बल्लेबाज को अंदर लाती हुई गेंद करते करते शायद आपके बाएं हाथ से जो ओवर द विकेट आप एंगल प्रदान करना चाह रहे थे एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, वो थोड़े से चूक गए, और पैड्स पर रही गेंद, पहली गेंद पर जब आप चौका बटोर लेते हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस भरपूर सा हो जाता है। और बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर एक प्रयास हुआ है, और क्योंकि आप ये चाहेंगे कि ये बरकरार रहे, आपके लिए ये एक अच्छी ओवर साबित हो सकती है। लेकिन पहली ओवर में केवल एक सिंगल और एक बाउंड्री आई, 5 रन बने, और झारखंड 5 बिना किसी नुकसान के हैं इस 169 रन के चेज में। Thank you for joining us for our live commentary of this thrilling match. As the players take a breather during the mid-innings break, we encourage you to stay right where you are, because the action is far from over. The intensity is about to be cranked up a notch as the teams regroup and strategize for the next phase of the game. But while the players catch their breath, we've got you covered with the latest news and updates from the world of cricket. From player insights to match analyses, we're your go-to source for everything cricket related. So make yourself comfortable, grab your favorite snack, and keep those headphones in, because we're going to keep you entertained and informed throughout the break. When the match resumes, you won't miss a beat. We'll be here to bring you ball-by-ball coverage, expert commentary, and all the excitement that the game has to offer. Thanks for choosing us as your cricket companion. Stay tuned, stay engaged, and get ready for an adrenaline-pumping second half of the match. Are you ready for the cricket event of the decade? The ICC Men's Cricket World Cup 2023 is just around the corner, and we have got something. सौरभ तिवारी 1 रन पर है, 4 गेंदें उन्होंने पहली ओवर में खेली, लेकिन उन 4 गेंदों में केवल 1 ही रन वो बटोर पाए। यहां पे उनसे ज्यादा उम्मीद होगी झारखंड की टीम को। बॉलिंग करने आए नीतीश कुमार रेड्डी। दूसरी ओवर, पहली ओवर में 5 रन ही बने, और एक बाउंड्री जो लगी, पैच पर गेंद थी, और स्टीफन को वो खामियाजा भुगतना पड़ा। एक अच्छी शुरुआत आप कैसे दिला सकते हैं? एक बाउंड्री प्रति ओवर अगर आपके खिलाफ बैटर ने लगा दी है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उस ओवर को बड़ा ओवर होने से रोकना है। 6 रन या 5 रन प्रति ओवर, हाँ बिल्कुल जायज है, वो बैटर भी प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन ये अवे गोइंग डिलीवरी, छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी वहां पर नाजिम सिद्दीकी ने, लेकिन वहां पर उस छेड़खानी का खामियाजा भुगत सकते थे। आउटसाइड द एज, आउटसाइड द ऑफ स्टंप का वो लाइन था, एक बाहरी किनारा लग सकता था बल्ले का, लेकिन वहां पर सुदैवी बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन में वो गेंद जा रही थी, अच्छी लय में गेंदबाजी यहां पर दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ हो रही है। हालांकि थोड़ा सा नया है ये गेंद, और ये देखिए बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया है
बिल्कुल बिल्कुल सेफ 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 जोन में बॉलर के ऊपर से वहां पर थे मिड ऑन, वहां पर थे लॉन्ग ऑन, क्षमा कीजिए मिड ऑफ, लेकिन वो दोनों भी फील्डर जो है प्रेक्षक बनकर रह गए, चेज भी नहीं किया। दूसरी बाउंड्री इस पारी की, और दोनों भी बाउंड्री कौन लगा रहे हैं? वो है कप्तान नाजिम सिद्दीकी। बिल्कुल बेहतरीन। चिरपुरपल्ली स्टीफन ने पहली ओवर में 5 रन दिए, लेकिन अब उसके बाद इस दूसरी ओवर में भी 5 रन आए हैं। 3 गेंदें और 5 रन यहां पर आ चुके हैं। देखते हैं कि बड़ा ओवर होता है क्या, या फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली वो गेंद कीपर से हुई मिसफील्ड, ऑड बाउंस उनके सामने गिरा और गेंद जा रही है 4-22 के लिए। इसमें कोई गलती नहीं है गेंदबाज की लेकिन वहां पर उस ऑड बाउंस की वजह से कीपर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अपनी बॉडी उस बॉल के पीछे नहीं ले पाए थे, और यारा संदीप सिर्फ और सिर्फ कीपर को देख रहे हैं। जो कप्तान है रिकी भुई, उनसे हुई गलती। नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी गेंद डाली थी, स्विंग एंड मिस हुआ वहां पर नाजिम सिद्दीकी का, लेकिन यहाँ पर 14 पर पहुंच गया है स्कोर। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। हालांकि बॉलर के नाम पे सिर्फ 5 रन गिने जाएंगे, 9 रन आए हैं इस ओवर में कुल मिला के अब तक। देखते हैं, ये स्टीयर कर दिया है, डी पॉइंट नहीं बचा पाएंगे वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से। बिल्कुल 2 चौके और एक 4-22 की मदद से इस ओवर में आए हैं 4-4, 8-4, 12, 13 रन और 18 पर पहुंच गया है स्कोर झारखंड का, और एक गेंद शेष है इस ओवर में। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि सौरभ तिवारी को वो लय नहीं मिल रही है, पहली 5 गेंदों में केवल 2 रन बनाए, और यहां पर 6 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं। 3 बहुत ही बेहतरीन बाउंड्रीज के साथ, एक मिड विकेट की तरफ खेल दिया था, एक स्ट्रेट खेला और एक डीप पॉइंट की तरफ खेला। बहुत ही अच्छी 360 बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर कप्तान नाजिम सिद्दीकी। सिंगल के साथ करेंगे इस ओवर की डॉट बॉल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। 18 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के हैं झारखंड 169 रन का पीछा करते हुए। Cric, where cricket unites the world. The ICC World Cup 2023 is more than a tournament, it's a global phenomenon. Cric connects fans worldwide as we follow the highs and lows, the triumphs and heartaches of this cricketing extravaganza. This tournament transcends boundaries, languages, and cultures. It's a stage where cricket aficionados from all walks of life unite to witness the highs and lows, the jubilant triumphs, and the heartbreaking heartaches. With Cric, you're not just a fan, you're part of a global community that shares the same fervor for the game. Whether you're cheering for your home team, a long-standing favorite, or just reveling in the sheer joy of cricket, Cric connects. सौरभ तिवारी यहां पर लय में नहीं नजर आ रहे थे। चिरपुरपल्ली स्टीफन ने दिला दी है पहली सफलता आंध्रा को। बाहर जाती हुई गेंद और सौरभ तिवारी खेलना चाहते थे, कवच के ऊपर से लगा बाहरी किनारा, टो एंड ऑफ द बैट और बाहरी किनारा दोनों एक साथ इसी जगह पर अगर आप बैट के कनेक्ट होता है ना, तो ये जाती है डीप पॉइंट या फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और वो फील्डर जो है वो बिल्कुल अच्छी पोजीशन में आ गए थे और एक बेहतरीन कैच वहां पर लपक लिया है। विजय त्रिपुराना विजय, इन्होंने बहुत ही अच्छा ये कैच पकड़ा और पहली सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। झारखंड 18 पर 1 अब तीसरी ओवर की पहली गेंद पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां पर इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे सौरभ तिवारी, और जा रहे हैं केवल 2 रन बनाकर 6 गेंदों में। और क्या ये एक शुरुआत है एक डाउनफॉल की, क्योंकि एक विकेट क्या लेकर आती है, एक और विकेट अगर यहां पर झटक देते हैं इस ओवर में तो थोड़े से बैकफुट पर चले जाएंगे, क्योंकि 169 रन आपको बनाने हैं। आप एक अच्छी स्टार्ट पर निर्भर तो है ही, लेकिन उस अच्छी स्टार्ट में आप कहीं पे और एक और विकेट ना खो दें। 6 ओवर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, क्योंकि अगली 14 ओवर में आपको फिर उस मोमेंटम पे थोड़ा सा दारोमदार रख के रन बनाने होंगे। विकास विशाल अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अपने कप्तान के साथ, नाजिम सिद्दीकी के साथ, और नाजिम सिद्दीकी जरूर चाहेंगे कि एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपे, एक अच्छी साझेदारी पनपने की कोशिश वो कर रहे थे सौरभ तिवारी के साथ, लेकिन
एक अच्छी गेंद चिपुरापल्ली स्टीफन के साथ अलग जोन में पहुंचा दिया है अब इस टीम को। जब आप पहले 3-4 ओवर में विकेट ले लेते हैं तो दबाव जो बनता है बल्लेबाज पर, क्योंकि आप पहले 3 ओवर में उस 6 ओवर के स्कोर का थोड़ा सा जायजा लेकर खेलते हैं, और जब आप 6 ओवर के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में आपके उस कैलकुलेशन में एक स्कोर बना हुआ रहता है कि इतने रन हमें बनाने ही होंगे, नहीं तो फिर खासी दिक्कत हो सकती है। देखिए ये स्लोअर वन, डिसीव हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन उतनी ताकत थी उस कंप्लीशन ऑफ शॉट में कि बॉलर के हाथ के नीचे से जब तक मिड ऑन के खिलाड़ी आए और उसे फील्ड करें, एक रन चुरा लिया। यहाँ पर अब नाजिम सिद्दीकी और विकास विशाल को ये बखूबी सोचना होगा कि क्या हो सकता है एक अच्छे पारी के लिए अपना प्रयास, क्योंकि जब आप अपनी पारी को आकार देने का प्रयास करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई या थोड़े से ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो निर्माण करने की पूरी कोशिश करेंगे बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाज। अच्छी फील्डिंग भी एक अहम भूमिका निभाती है जब आप डिफेंड कर रहे हो। 169 यहाँ पर देखिए चिप कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ नाजिम सिद्दीकी ने, और 2 रन चुरा लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर देखने मिली है। चिप करते हैं तो बल्लेबाज को ये पता होता है कि किस नाजुकता से या किस जोर से उन्होंने उस गेंद को खेला है, और यहाँ पर अपनी एक कंट्रोल्ड इनिंग्स को अच्छा एक रूप दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। चिपुरापल्ली स्टीफन ने एक अहम विकेट तो लिया है, केवल 8 रन दिए हैं पहले 10 गेंदों में, हालांकि उनके खिलाफ बाउंड्री भी लगी, लेकिन यहां पर एक अच्छा जो है प्रयास वो कर रहे हैं। बिल्कुल वापस एक बार पैड्स पे करते हैं तो रनों के लिए जाएंगे, ये सोच के चलिए डीप मिड विकेट के ऊपर खेल के, ये शायद रन आउट है। रिकी भुई जानते हैं, कॉन्फिडेंट है, दूसरा रन थोड़ा सा स्लो था और इसी कारणवश मुझे लग रहा है कि यहां पर शायद द बैटर इज कॉट नैपिंग। ये दूसरा रन थोड़ा सा मुश्किल वाला, क्योंकि थ्रो बिल्कुल सही स्टंप के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर कलेक्ट किया, और ये एक रन आउट है। अनवांटेड विकेट, अननेसेसरी रिस्क जहां पर आप लेते हैं वहां पर एक उंगली जरूर उठेगी अंपायर की, और आउट करार दिए गए हैं कप्तान नाजिम सिद्दीकी। उस दूसरे रन की उस मोह में, वो कहते हैं बड़े बुजुर्ग, मोह माया में ना फंसे। 169 एक गेंद में नहीं बनने वाले, अगर आपने एक रन लिया होता तो शायद आप बच जाते, लेकिन यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। पहले डीप मिड विकेट की तरफ से एक अच्छा थ्रो, और उसके बाद गुड कलेक्ट और एक अच्छी कीपिंग, वहां पर कप्तान ने उड़ा दी है गिल्लियां और दूसरे टीम के कप्तान को भेज दिया है वापस पेवेलियन में। नाजिम सिद्दीकी जो सेट लग रहे थे, कप्तान की एक अच्छी पारी अपेक्षित थी वहां पर, और यहां पे 14 रन उनके नाम, शायद 15 होंगे क्योंकि दूसरे रन पर आउट हो गए हैं। ये बहुत ही बुरी स्थिति जब आप चेस कर रहे हैं और पावर प्ले में आपने केवल और केवल 22 रन पे 2 विकेट। त्रिपुराना विजय थ्रो के साथ बिल्कुल निपुण, और देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खेला गया था, ये एक बहुत ही अच्छा शॉट था। उन्होंने देखा कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल आगे थे वो, अच्छा कलेक्ट, अच्छा थ्रो और बहुत ही अच्छी कीपिंग। वहां पर जानते थे कि ये विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्टीफन, हालांकि उनके नाम पर ये विकेट नहीं चढ़ेगा, लेकिन एक अच्छा शॉट खेलने के बावजूद जब आप विकेट लेते हैं तो
उस बॉलर को थोड़ी सी क्रेडिट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसी एक बॉल की थी कि फोर्स किया बल्लेबाज को लॉफ्टेड खेलने के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में। एक डॉट बॉल के साथ हुई है तीसरे ओवर की समाप्ति। 22 पर 2 है झारखंड, 169 रन उन्हें टारगेट बनाना है, 147 चाहिए 102 गेंदों में। Cric, where cricket unites the world. The ICC World Cup 2023 is more than a tournament, it's a global phenomenon. Cric connects fans worldwide as we follow the highs and lows, the triumphs and heartaches of this cricketing extravaganza. This tournament transcends boundaries, languages, and cultures. It's a stage where cricket aficionados from all walks of life unite to witness the highs and lows, the jubilant triumphs, and the heartbreaking heartaches. With Cric, you're not just a fan, you're part of a global community that shares the same fervor for the game. Whether you're cheering for your home team, a long-standing favorite, or just reveling in the sheer joy of cricket, Cric connects you to a worldwide network of passionate. एक बार यहाँ पर अपनी दूसरी ओवर करने के लिए आए हैं, इस इनिंग की चौथी ओवर करने के लिए आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी। पैरों पर गेंद, उसे ढकेल दिया है। अब ऑन साइड में डीप मिड विकेट के फील्डर आएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन चुरा लिया है वहां पर विकास विशाल और मोहित कुमार की। इस जोड़ी को अब एक साझेदारी बनानी होगी। वो 81 रनों की जो साझेदारी बनी थी पहली इनिंग में रिकी भुई और नीतीश कुमार रेड्डी में, उन दोनों की साझेदारी को याद करके अब इन दोनों को भी वो एक अच्छा सा काम अपनी टीम के लिए करना होगा। आपने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का एक निर्णय लिया था, उस निर्णय में आपने केवल 168 रन सामने वाली टीम को बनाने का मौका दिया, लेकिन अब उस 169 रन की इस भागदौड़ में आपको अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम के लिए एक अच्छा काम करना है। और इसके अगर एक बाजू पे नजर डालें तो ये एक ऐसा सेशन है प्ले का जो पहली 6 ओवर में आप कम से कम रन अगर आप देंगे सामने वाली टीम को, तो आप अगली 14 ओवर के लिए एक अच्छा सा एक फाउंडेशन बना रहे हैं। किसी भी एक रन चेस के लिए क्या होता है कि एक अच्छी साझेदारी प्राथमिक तौर पर पहली 6 ओवर में बने। यहाँ पर कैजुअली डाउन द विकेट चल रहे थे बल्लेबाज और नीतीश कुमार रेड्डी ने फ्रेंडली थ्रो तो किया लेकिन जोर से और बल्लेबाज को पीछे ढकेल दिया कि आप ऐसे घूम नहीं सकते। आपने डिफेंड तो कर दिया लेकिन आप ऐसे ही पिच पर चल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बाहर हैं तो मैं रन आउट करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ूंगा। अगर यहाँ पर गलती से विकेट मिल भी गया तो तीसरी विकेट हो जाएगी 24 रनों पर। और दोनों की चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, तो एक अच्छा एक दोस्ती भरा भी माहौल वहां पर है। लेकिन अपनी टीम के लिए विजय श्री प्राप्त करना दोनों भी टीम का जो है वो प्रथम लक्ष्य होगा। यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप एक पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा के ऊपर से, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया। मोहित कुमार अभी भी अपने खाता खोलने से दूर हैं और एक अलग अलग शॉट्स ट्राई कर रहे हैं, खुद के साथ थोड़े से नाखुश हैं क्योंकि वो मिस हो गई। अगर कनेक्ट हो जाती तो शायद रन्स मिलते यहाँ पर, लेकिन एक अच्छी गेंद ये होता है एक अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा। जब आपको एक लोकल टूर्नामेंट में भी अगर आप पूरी शिद्दत के साथ खेलते हैं, पूरी एक स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, पूरी पावर के साथ खेलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना कितना जरूरी है। कि फिर एक बार पटकी हुई गेंद एंगल्ड इन, वो शरीर की तरफ एंगल थी, सिर्फ उसे झटक दिया है और एक रन प्राप्त कर दिया। क्योंकि वहां पर पास में कोई फील्डर नहीं था तो उन्होंने एक रन का एक इजाफा अपने स्कोर बोर्ड में कर दिया है। 3.4 गेंदों में उन्होंने 25 रन बनाए हैं, मतलब 22 गेंदों में 22 लीगल डिलीवरीज में आपने 25 रन बनाए। 169 अगर आपको प्राप्त करने हैं तो पहली 10 ओवर में आपको तकरीबन नहीं तो 80 तक आपको आपके स्कोर बोर्ड पर दिखें, तो अगली 10 ओवर में आप वो बचे हुए 80 या 90 रन हैं वो बटोरने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब पहली 3.4 ओवर में आपने 25 रन बनाए हैं, इसका प्रेशर तो जरूर होगा। लेकिन विकास विशाल और मोहित कुमार वो अगर यहाँ पर
रुक के अगर बल्लेबाजी करने की सोचे, अगर ठान ले कि एक बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए, यहाँ से अगर ये दोनों सोचें कि चौथी ओवर है, लगभग 13वीं या 14वीं ओवर तक हम विकेट नहीं देंगे और रन जो सिंगल है डबल है वो चांसलेस इनिंग खेलने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन रखें, कोई भी रिस्की सिंगल ना लें। अगर आपको हवा में भी खेलने हैं तो पूरी ताकत के साथ और पूरे हौसले के साथ खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद एक अच्छी स्थिति में आप टीम को ला सकते हैं। 169 बिल्कुल गेटेबल है T20 में, और अगर आप उस दिशा में जाने का सोचें तो एक अच्छा आप निर्णय लेने का ये सही वक्त है। आखिरी ओवर चौथी इस ओवर की, और देखते हैं क्या करते हैं आउटसाइड या ऑफ स्टंप पे। बहुत ही अवे गोइंग डिलीवरीज तो एट विल प्रदान कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 ओवर के बाद 25, 2 विकेट के नुकसान पर है झारखंड। 169 रनों का पीछा करते हुए अब 144 रनों की जरूरत है 96 गेंदों में। Cric presents ICC World Cup 2023. Join us as we embark on a cricketing adventure like no other. The ICC World Cup is the pinnacle of cricket, and Cric is your front row seat to this spectacle. Witness the legends of today and tomorrow make history in this epic battle of skills and passion. Join us in celebrating the cricketing giants of today and the rising stars of tomorrow as they battle for glory in this epic clash of skills, strategy, and unwavering passion. From thrilling centuries to game-changing wickets, the ICC World Cup is a canvas on which legends are painted. Our commitment is to ensure you're never far from the cricketing spectacle that defines the sport's history. The ICC World Cup 2023 promises to be an unforgettable chapter in cricketing annals, and Cric is your companion on this remarkable journey. Witness the legends in action as they create history in this epic battle of skills and passion. चार ओवर के बाद 25 और 4 ओवर के बाद 26 बिना किसी गेंद के 1 रन कैसे बढ़ गया? क्योंकि तेजा ने, कवूरी साई तेजा जो हैं, उन्होंने एक गेंद बहुत ही बाहर डाल दी और सामने वाली टीम को 1 रन बहाल कर दिया है। उन्हें अब प्रयास करना चाहिए कि वो अच्छी एक गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर दे, क्योंकि पहली 4 ओवर में बिल्कुल भी कोई एक मौका नहीं दिया है हाथ खोलने का और बल्लेबाजी खुल के करने का। उन 2-3 बाउंड्रीज को अगर आप छोड़ें तो वहाँ पर कोई भी ऐसे 3 बाउंड्री जो लगी है, अब इस पहले 27 रनों में यहाँ पर प्रयास होना चाहिए कि वाइड्स ना करें, एक्स्ट्रा गेंदे ना दें। जितना आप एक्स्ट्रा गेंद देंगे उतना बल्लेबाज को आप समय दे रहे हैं सेटल होने का। 27 पे 2 है, आप चाहेंगे कि पावर प्ले तक एक और विकेट यहाँ पर मिल जाए और 40 रन से ज़्यादा न बने। लेकिन अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे जो आपको एक अच्छे रुख से भटका देगी, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको गेंदबाजी में से। और यहाँ पर 27 रनों में अगर आप सोच रहे हैं कि 7 एक्स्ट्रास हैं, 4-22, चलो वो एक मान सकते हैं कि अच्छी गेंद थी, लेकिन आपके ही कीपर की वजह से, आपकी फील्डर की वजह से वो 22 गए हैं। लेकिन 3 वाइड्स ये बिल्कुल नामंजूर। ये एक अच्छी गेंद, एक लाइन वो मेंटेन कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर की, तकरीबन 5वें या 6ठे स्टंप की तरफ, लेकिन और थोड़ा बाहर डालते हैं तो वाइड हो जाती है। यहाँ पर एक कट करने का बिल्कुल अच्छा प्रयास था, कनेक्ट नहीं कर पाए और साई तेजा जो है अब थोड़ी सी लय प्राप्त कर रहे हैं। क्षमा कीजिए, ये एक दौर है ना पहले 6 ओवर का। मैं हमेशा से स्ट्रेस करता हूं कि 169 पहले 6 ओवर में नहीं बनने वाले, लेकिन उस पहली 6 ओवर में आपको प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा रन बने और कम से कम विकेट आप बहाल करें सामने वाली टीम को। एक आड़ी बैट से फिर एक बार, ये पहली इनिंग में भी हमने देखा था, जो बल्लेबाज थे संदीप, उन्होंने एक आड़ी बैट से स्ट्रेट शॉट खेला था और यहाँ पर फिर एक बार उसका ही रेप्लिका और बॉलर के हाथ के नीचे से डाइव उन्होंने फील्डिंग करने का कोशिश किया।
लेकिन वो बॉल जो है वो बहुत ही तेजी से उन्होंने टाइम किया था और एक अच्छी खासी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत मोहित कुमार ने की है। पहली थोड़े से धीमे थे, लेकिन अपनी 7वीं गेंद पर उन्होंने एक चौका लगा दिया है। स्ट्रेट बैक द बॉलर। अब 2 रनों पर है विकास विशाल और 5 रनों पर है मोहित कुमार। यहाँ पर कट करने का एक बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कट ना करें सीधी बैट से, अगर आप बैकफुट पर जाके उसको पंच करें तो भी आपको एक रन प्राप्त होने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप बार बार एक ही शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो जो गेंदबाज हैं, शायद साई तेजा नहीं लेकिन दूसरे गेंदबाज आपको नोट कर रहे होंगे, तो वो आपके खिलाफ कुछ यंत्रणा बनाकर आपके साथ छेड़खानी करने का एक प्रयास करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल 31 रन बने हैं, लेकिन मैं नाखुश हूं उस चीज से जहां पर स्कोर बोर्ड कहता है कि ज्यादा वाइड्स डाली गई है। जी हाँ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक कैच यहाँ जाता हुआ जस्ट कवर को क्लियर कर देंगे। और ये आपकी गलती होगी, यानी आप बल्लेबाज हो तो, कि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ आपको वो एक पर्टिकुलर गेंदबाज ही ऑब्जर्व कर रहा है, गेंद में फील्ड में और 10 लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। कप्तान है वहां पर, कप्तान अगर विकेट कीपर है तो उनको पता है आपकी चहलकदमी क्या है, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है। जैसे कि MS धोनी को पता चल जाता है कि ये बल्लेबाज के मन में क्या सोच रहा होगा, और अमूमन वो सही ही निकलता है। चाहे वो MS धोनी लीजिए, ऋषभ पंत लीजिए, KL राहुल लीजिए, उनको एक आइडिया रह जाता है कि ये बल्लेबाज स्वीप शॉट ज्यादा खेलेगा या फिर कुछ आड़ा टेढ़ा शॉट खेलेगा या फिर रिवर्स स्वीप खेलेगा। तो आप ये तो बिल्कुल भी भूल ना करें कि आप सेम शॉट बार बार खेले। तो बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आपको एक ही शॉट बार बार नहीं ट्राई करना चाहिए। आखिरी गेंद इस 5 ओवर के, और इसे पंच कर दिया है पॉइंट के दिशा में 4 रनों के लिए। तो एक्चुअली ओवर अच्छा बीत रहा था कवूरी साइतेजा के लिए। अगर आप वो 2 वाइड हटा दे तो उन्होंने 4 अच्छी गेंदें डाली, जहां पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया था, और वो 2 वाइड जोड़ दिए तो 3 रन। लेकिन जो 2 खराब गेंदें डाली उसमें 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो ओवरऑल ये ओवर जो है गया है 11 रनों के लिए, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस हिसाब से ये ओवर चलता हुआ। 5 ओवर के बाद झारखंड 36, 2 विकेट के नुकसान पर 133 रनों की आवश्यकता 90 गेंदों में। Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan face off in the 12th ODI of the ICC World Cup on October 14th. This clash is not just a cricket match, it's a cultural phenomenon, a rivalry that transcends boundaries and ignites the passion of millions. India versus Pakistan encounter promises to be a high-voltage affair filled with intensity, pride, and suspense. It's a battle of nerves, skills, and strategy as these cricketing giants aim to outdo each other. With both teams boasting exceptional talent and a history of iconic moments, the match on October 14th is destined to be a nail-biter. India seeks to maintain its dominance, while Pakistan yearns to turn the tide in their favor. Cric ensures you don't miss a single moment of this cricketing extravaganza. Our comprehensive coverage includes... Get ready for the mother of all cricket battles as arch rivals India and Pakistan. 5 overs then, 36 for 2, make that 37 for 2 as Mohit Kumar and Vikas Vishal trying to forge a partnership now. It's currently worth 15 from 14 deliveries. They don't need to do much because the required run rate is close to 9 and it's manageable. It's kind of manageable. If they can get a good finish to the power play, get 9 to 10 runs in this over, then they are kind of roughly in that 8 to 9 run mark per in that power play, which is comfortable. And remember, the middle overs is where the Andhra lost their steam. They were 54 for 1 after the power play, and then in the middle overs they scored 55 for 3. That's 9 overs. Now, even if Jharkhand say score 45 odd in the power play, need to go hammer and tongs. Meanwhile, a short delivery outside the off stump, because in this over, now the off spinner continues. Tripurana short mid wicket, a bit of yes and a no between the short mid wicket, and even if they had gone 1 for the loss of 2 wickets. Now this is a short ball initially, and then just helped it between short fine leg and square leg, and he gets the second boundary of the over. So as Jharkhand were wanting, they have got a good finish, 30 runs in the last 10 balls. So clearly that early loss of those 2 wickets
has kind of been compensated. And only now they don't need to lose this third wicket. This partnership is now it goes for the sweep in the air. Has it cleared short fine leg? Oh yes, it has. Short fine leg runs across for the catch. It was a bit of a top edge as he went for the sweep. Vikash Vishal. The ball got big on him due to the extra bounce, and it took the top edge and cleared short fine leg. It landed in a no man's region, and by the time short fine leg got to it, 2 runs were taken. So make that 11 runs of this over as well, and with 1 ball left, 47 for 2. What's the final ball of the power play going to be? Is it going to be in favor of either of the sides, or is it going to be a non-event ball? We'll come to know in just a moment. It's a non-event ball as the arm ball is bowled around the leg stump, and Vikas Vishal was looking to back away and punch it through the offside, but the ball went off the inner half, skidding through towards short fine leg, and a single was taken. So 12 runs of the 6th over, 11 of the 5th. A good finish to the last 2 overs of the power play for Jharkhand, as they managed to get 23 runs in the last 2 overs of the power play. 48 for 2. They are chasing 169 for victory. Brace yourselves for the grandest cricketing event in Asia. The Asian Games Cricket Tournament is back with a bang. From September 27th to October 7th, 2023, Hangzhou, China, will be the battleground for cricket glory, where the finest teams from Asia, which include giant powerhouses such as India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, and host nation China, will vie for the ultimate prize. Witness the drama, the rivalry, and the sheer skill on display. The top 2 teams from each group will clash in the semi-finals, and only the best will make it to the final showdown. The Asian Games Cricket Tournament is sure to be a thrilling spectacle of cricket, and fans from all over Asia will be tuning in to watch the action. Don't miss out on this cricketing extravaganza. Download the Cric app now and catch every moment of this thrilling spectacle, live and in real time. Brace yourselves for the grandest cricketing event in Asia. The Asian Games Cricket Tournament is back. Right, the 50 is up now for Jharkhand in the 7th over. A short ball from Mohan has been punched down towards wide long on for a couple. Lalit Mohan is the new bowler, and we've already seen plenty of bowlers being used in this innings so far. From Andhra, he becomes the 5th bowler. Chipurapalli Stephen bowled the first 2 overs for 9 and got a wicket. Then Nitish Kumar Reddy bowled 2 overs for 12. They were economical. But then Kauri Saiteja went for 11 in his first, and Tripurana Vijay went for 12 in his first. And beg your pardon. And Lalit Mohan is gone for 3 in his first delivery. So time now to give you an update from the Irani Trophy, as Irani Cup, as the rest of India are playing very, very well. Now they've reached a commendable score. They've reached 269 for 7. Yes, they were in a bit of a strife at 180 odd for 5. They were 183 for 5. But then Shams Mulani and Srikar Bharat had a good partnership of 59 for the 6th wicket. Shams Mulani fell for 32. Again, another start not converted. And then shortly after, Srikar Bharat also fell to Parth Bhatt, and he fell for another. So as many as 4 batters have got starts and not converted. Mayank Agarwal 32, Hanuma Vihari 33, Srikar Bharat 36, and Shams Mulani 32. And as of now, Sai Sudarshan is the only batter to cross 50 and the highest scorer as well of this innings so far, 72. And as far as the wickets are concerned, 2 have been taken by Dharmendra Singh Jadeja, 1 by Yuvraj Singh Dodia, and Parth Bhatt has had a field day out there, 4 for 79. But if you talk about the score, they are now slowly getting to a kind of a defendable score, because if they can get it to 330, 350 from here, I know it's with 3 wickets in hand, it might be a bit of an ask. But if if you look at this way, that the last 3 wickets add 30, then you can add close to 100 runs. Now, so for example, this pair of Pulkit Narang and Saurabh Kumar have added 23 so far for the 8th wicket. So 248 for 7 they were, and they can try and get to 340, 350 if there is one set batter who bats till the end, and then they can get a good score. Because this is the first day, this is the opening day of the Irani Cup, and the pitch as such
would not have started to deteriorate. But from day 2 onwards, or day 3 rather, you would find batting difficult. So you want to get as many runs as possible. Try and get a 350 mark. Then try and bowl out Saurashtra under 350. Try and get to that first innings advantage, first innings lead. Because then even if the match is a draw, you are announced the victors. Meanwhile, another over has gone by. A quiet over then by the match standards, because just 6 runs have come from that over. 7 gone. Jharkhand are 54 for 2. They need 115 from 78 deliveries. It's cricket like never before at the Asian Games 2023. This time, it's all about the fast and furious T20 format. Both men and women will showcase their cricketing prowess in Hangzhou, China, from September 23rd to October 8th. Catch the men's cricket tournament, featuring 15 formidable teams, kicks off on September 27th. The ultimate showdown for bronze and gold takes place on October 7th. Hold on to your hats because it's a thrilling format. India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh, the top dogs, leap directly into the quarterfinals, while the rest of the pack battles it out in the group stage. The 4 group champions join the Elite 4 in the top 8 stage. And here's the kicker, India makes its Asian Games cricket debut. Yes, 8th over starts off with a boundary. Tripurana Vijay has come on to bowl a short ball outside the off stump, and it has been punched away for a boundary. And is the 8th over in progress now. 58 for the loss of 2 wickets. A short ball now again from Tripurana Vijay, and Kumar has helped it towards mid wicket for a single, and a run has been stolen. 59 for the loss of 2 wickets are Jharkhand, and now this partnership is worth 37 from 27 deliveries. It's very nicely poised at this point in time. The score now moving on to 59 for the loss of 2 wickets. And then talking about South Africa, New Zealand as well. This is the third ODI between the two teams, and of this particular series. If I could give you the update of this series so far. Well, the first ODI was won by South Africa, and both first 2 ODIs have been won by South Africa. Both have been won chasing. Now, as far as this ODI is concerned, South Africa are batting first. It's a 45-over game. First, it was a 48-over game. Then it was curtailed to 45 because of rain. And South Africa are not quite doing well. They are 97 for the loss of 4 wickets. Laura Wolfart going for 24. Tasman Bridge 12. Actually, they were 20 for no loss, and they lost 4 wickets pretty quickly. And Laura Wolfart, Tasman Bridge, Anneke Bosch, and Sune Luz. And after that, Marizan Cap and Chloe Tryon have kind of built a partnership. The partnership is worth 30 as of now, and they would be eyeing a score somewhere in the region of 250, provided they battle, because they have the likes of Nadine de Klerk and Sinola Jafta to come out to bat. But after that, it's just the bowling. Coming back to this particular game then, it is the final delivery of the 8th over. 61 for 2 are the Jharkhand team, and we are about to enter the final over. Yeah, final delivery. Yes, it's this one held onto the wicket, and Vikas Vishal was early into the forward push and almost chipped back a return catch as he lunged to defend. It landed well in short of the bowler, but still not a bad over for Jharkhand, because they got that much needed boundary early on the over, and they made it a 7-run over. 8 overs gone. 61 for the loss of 2 wickets, chasing 169 are Jharkhand. The World Cup is back, and Cric is here to take you on a journey to the biggest cricket tournament in the world. Download the Cric app now and get ready for an unforgettable experience. We'll bring you all the latest news, analysis, and highlights, as well as exclusive content and features that you won't find anywhere else. With Cric, you'll be right at the heart of the action, no matter where you are. You'll be able to watch live matches, follow ball-by-ball commentary, and get the latest scores and
Another over starts at the boundary. Back-to-back overs where the first ball has gone for a boundary. Flighted delivery from Manish Golamaru, left arm round the wicket, around the off stump. Mohit Kumar gives himself room to the leg side and plays his inside out over cover and starts the over with a boundary. 65 for 2 after 8.1 overs are Jharkhand needing 104 from 71. Mohit Kumar moves to 19 in a partnership of 43. Now a round damage ball around the off stump. It's walked away towards mid wicket for a single, and that's what the batters are kind of thinking. That's let's not take any undue risks. Try and just make this what we say now an 8-9 run per over, because your required run rate is hovering around that 8.5 to 9 mark, and all you need is that one boundary per over, but also ensure that you score runs of the remaining deliveries. Try and make it an 8-9 run per over. So you got 5 of the first 2 deliveries, and and singles of the next 2. So that's 6 of the first 3 deliveries. As a short ball is punched down towards long on, and a single is taken. The 67 for the loss of 2 wickets. So Manish Golamaru becomes the 6th bowler to be used in this innings. Chira Purapalli Stephen 2 overs 1 for 9. Nitish Kumar Reddy 2 overs none for 12. Kavuri Sai Teja 1 over none for 11. Tripurana Vijay 2 overs none for 19. Lalit Mohan 1 over none for 6. And Manish Golamaru has gone for 7 as of now in his first 4 deliveries. A left arm orthodox bowler. Clearly Andhra believe that spin is their strength, and hence they want to maximize their resources. Short ball barely bounces from left, a round armish delivery from Manish Golamaru, and it was spinning away from Vikash Vishal. He had to drag it, and he dragged it towards long on. Should have been just a single, but a fumble there converted that single into a couple. So just that kind of over which Jharkhand were looking for, because they started the over with a boundary, but the remaining balls, that's from balls number 2 to 5, every ball has yielded at least a single. So the result is this over has now gone for 9, and we still have a ball left in this over, and that also is scored off because it's around the leg stump and it's worked away towards deep mid wicket. So 10 runs coming from the 9th over. Jharkhand are 71 for 2, needing 98 from 66 deliveries. Get ready for a cricket extravaganza like no other. The World Cup 2023 ODI is here, and it's set to be a monumental clash of titans. Brace yourself for a thrilling spectacle of bat and ball as nations battle for supremacy on the grandest stage. With electrifying strokes, nail-biting finishes, and awe-inspiring athleticism, this tournament promises non-stop action that will keep you on the edge of your seat. Join us in celebrating the spirit of cricket as the world unites in the name of this beloved sport. Whether you're a die-hard fan or a casual observer, the World Cup 2023 ODI guarantees unforgettable moments. So don't miss out. Secure your tickets today and become a part of cricketing history. This is where legends are made. Don't miss out on this cricketing journey. Download the Cric app today and be part of making the 2023 Cricket World Cup the most thrilling and unforgettable one yet. Get ready for a cricket extravaganza like no other. The World Cup 2023 ODI is here, and it's set to be a monumental clash of titans. Brace yourself for a thrilling spectacle of bat and ball as nations battle for supremacy on the grandest stage. With electrifying strokes, nail-biting finishes, and awe-inspiring athleticism, this tournament promises non-stop action that will keep you on the edge of your seat. Join us in celebrating the spirit of cricket as the world unites in the name of this beloved sport. Whether you're a die-hard fan or a casual observer, the World Cup 2023 ODI guarantees unforgettable moments. So don't miss out. Secure your tickets today and become a part of cricketing history. This is where legends are made. Don't miss out on this cricketing journey. Download the Cric app today and be part of making the 2023 Cricket World Cup the most thrilling and unforgettable. I think Andhra have realized that spin is not quite working wonders for them, because if I look at the spinners, Tripurana Vijay 2 overs 19, Lalit Mohan 1 over 6, Manish Golamaru 1 over 10. So the spinners have gone for 35 in 4 overs and without any success. In fact, only 2. There have been only 2 successes for Andhra, and one has been to Chhattisgarh
Chipurapalli Stephen got the first wicket, and then the second was a run out. But after that, this has been a very enterprising partnership. 50 from just 39 deliveries between the two batters. That's Mohit Kumar and Vikash Vishal. And because of this, I think they do deserve a bit of a cheer. Don't you think so? Yes, a bit of a cheer is what Mohit Kumar and Vikash Vishal were needing, and they have resurrected this very nicely because they have ensured that the required run rate has not gone out of bounds. It is still there under that 9 mark, and they are making sure that there is there isn't any harakiri out there, trying to make sure that the bowlers are the ones who need to make things happen and try and get to that one boundary per over mark. So as far as Andhra are concerned, they were 54 for no loss, and then by the end of the 10th over they were roughly 70 odd. So here is the period where Jharkhand can get ahead of Andhra, and now balls like this help. A loose delivery from Kauri Saiteja down the leg side, a short ball, and it's been just helped over short fine leg, and it's gone all the way over fine leg. And now it becomes an 8-run over. Now 4 balls, 8 runs, 12. This is exactly what the batters were waiting for. They could not start the over off with a boundary, but now this particular boundary, that's a 6, makes things a lot easier. 90 needed from 62 as Vikash Vishal moves on to 33. His first 6, in fact, this partnership's first 6. And if I look at the entire innings, it's the first 6 of the innings as well. Because in the first innings we saw quite a few 6s, but now in the second innings this is the first 6, and they don't actually need to go for those big hits, do they? When runs are coming easily, the next ball worked away towards deep mid wicket for a single, then you don't actually need big hits like those if you're getting 9 runs without taking off much risk. This partnership now has moved on to 58 from 42, 89 runs needed under 90 now, 89 needed from 61, and Jharkhand are looking more and more confident by the minute because they have played out 6 bowlers, and have to say no one up after the first 2 have looked as threatening as those first 2. Oh, beautifully played by Mohit Kumar. A length ball outside the off stump. He just gets his bat down in time, opens the face of his bat and steers the ball behind point, and the ball races away. Deep Thought started to run, but then gave it up pretty quickly. 13 runs from the over, 10 gone. Jharkhand are 84 for 2, chasing 169 for victory. Event of the decade. The World Cup 2023 ODI is back, and it's bringing the thunder. Get ready for a cricketing carnival like never before, where legends are born and nations collide in epic battles. From dazzling centuries to jaw-dropping catches, this tournament promises spine-tingling moments that'll leave you breathless. Feel the adrenaline rush as your favorite teams compete for glory, and the stadium roars with excitement. Grab your seats now and witness cricketing history unfold before your eyes. Don't miss out on the action. The World Cup 2023 ODI is where champions rise and dreams take flight. Brace yourselves for the cricket event of the decade. The World Cup 2023. 10 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर है 84, 2 विकेट के नुकसान पर। तो जो उम्मीद जताई थी झारखंड के माफ कीजिएगा आंध्रा के ओपनिंग बॉलर्स ने, चिपुरापल्ली स्टीफन और नीतीश कुमार रेड्डी ने, उसके बाद ऐसा कुछ फॉलो अप, कहते हैं ना, फॉलो अप नहीं हो पाया है बाकी गेंदबाजों से, और ये साझेदारी जो है मोहित कुमार और विकास विशाल के बीच काफी अच्छी पनप रही है, और अब ऐसे लग रहा है आंध्रा के पास ऑप्शंस ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आप चेजिंग साइड को ये पता है कि आपके पास 59 गेंदे हैं और 59 गेंदों में आप 84 रनों की आवश्यकता है। 1980 में ये इम्पॉसिबल था, 2000 के दशक में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन 2020 और 30 के दशक में ये इजी पीजी है। 8 विकेट हाथ में है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है शुरू से ही 8.5 के आसपास रहा है, और अभी भी अगर हम एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 8.4 है। तो उन्होंने ना ही वो रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा रन्स मारे हैं और ना ही उसे कम होने दिया है, और यहाँ पर शायद ललित मोहन को और बाकी आंध्रा गेंदबाजों को जरूरत है कि थोड़ा गेम को स्लो डाउन करने की, क्योंकि गेंदबाजी काफी फास्ट रही है, जल्दी ओवर्स हुए हैं, और कभी कभी ये आपके लिए भी खराब होता है क्योंकि आपके पास थोड़ा सोचने के लिए समय नहीं रहता। तो आप
आराम से थोड़ा रुक कर गेंदबाजी कर सकते हैं और इसी बीच बल्लेबाजों को थोड़ा इम्पेशेंट भी कर सकते हैं, आतुर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायरेक्टेड जरा लगा जरूर है स्ट्राइकर्स एंड पर, लेकिन इस बार कोई अपील नहीं विकेट कीपर द्वारा। 86 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपके पास मोमेंटम नहीं है फिर भी आप जल्दी जल्दी डालते हैं तो फिर वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। जबकि बैटिंग टीम को आदत पड़ जाती है और जब बैटिंग टीम अच्छे मोमेंटम में होती है और उन्हें गेंद के लिए रुकना पड़ता है तब उन्हें काफी ऐसे आतुरता लगती है। और एक और चीज है आंध्रा के पास जो उन्हें खल रही है कि उनके पेस बॉलर्स को चल नहीं रहे। 3 पेसर्स 3 स्पिनर्स को यूज किया है और पहले तो पेसर्स को आप निकाल दे स्टीफन और नीतीश कुमार रेड्डी को, उसके बाद तो कवरी साईतेजन ने तो रन्स बहा दिए हैं। उसके बाद त्रिपुराना विजय स्पिनर, ललित मोहन स्पिनर, मनीष गोलामारू स्पिनर, तीनों ही स्पिनर्स कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाए हैं। फिलहाल ये ओवर में 2 रन आए हैं, 3 गेंदों में 2 रन। अगर थोड़े डॉट बॉल्स यहाँ पर बना सके आंध्रा की टीम, शायद थोड़ा दबाव आ जाए, शायद आप एक उम्मीद कर बैठे कि मे भी झारखंड की टीम है कोई तो कोई गलती कर बैठे और अपना विकेट गवा बैठे। और जैसे आपकी टीम के साथ हुआ, जैसे एक विकेट गिरा और दूसरा भी गिरा और तीसरा भी गिरा और एक कोलैप्स काइंड ऑफ हुआ था, शायद वैसी कुछ घटित हो। लेकिन हाँ, आपको उम्मीद जरूर रखनी पड़ेगी और मे भी ऐसे केस में आप चाहिए तो एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल के अंदर रख सकते हैं। आप वो जो इजी सिंगल मिल रहा है वो रोक सकते हैं। एक और इजी सिंगल, गेंद अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मिडिल स्टंप पर पिच होकर बाहर की तरफ घूमी गेंद, लेकिन क्योंकि आजू बाजू कोई फील्डर है नहीं तो बल्लेबाज जो है मोहित कुमार, उन्होंने आराम से अपना समय लिया, पीछे गए और धकेल दिया, सिर्फ धकेला उसे कवर की दिशा में और आराम से 1 रन चुरा लिया। अब ये ऐसी चीजें हैं जो एक बॉलर को रोकनी चाहिए। अगर आपको मेरे बॉलिंग पे रन बनाने हैं तो आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए, ओवर द टॉप जाइए, रिस्क लीजिए और अगर आप सफल रहे तो फिर हाँ एक अच्छा शॉट माना जाएगा। अन्यथा कम से कम मेरे गेंदों पर एक सिंगल तो आप मान लीजिए, एक और सिंगल, कदमों का इस्तेमाल किया, सिर्फ धकेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ और यहाँ पर 1 रन आसानी से बन गया। तो कोई भी बाउंड्री नहीं आया ये ओवर में, लेकिन कोई भी जोखिम भी नहीं उठाना पड़ा बल्लेबाजों को। 5 रन फिर भी आए इस ओवर में। 11 ओवर के बाद झारखंड 89 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों की आवश्यकता बचे 9 ओवरों में। Prepare for cricket's most epic showdown. The World Cup 2023 ODI is here, and it's a roaring tsunami of talent, teamwork, and tenacity. This tournament is a masterpiece of cricketing brilliance, where boundaries are broken, records shattered, and hearts captivated. From breathtaking centuries to game-changing wickets, every match is a rollercoaster of emotions. Join the global cricket family and cheer for your nation as they chase glory. Feel the adrenaline surge through the stadium, uniting fans from every corner of the world. The World Cup 2023 ODI, where cricket dreams come true. Cric ensures you're never far from the action. Tune in to live matches, follow every ball with our immersive commentary, and stay updated with real-time scores and statistics. Plus, connect with fellow fans, share your predictions, and be part of the excitement. ओवर और 89 रन थे 11वीं ओवर के बाद। अब उन्होंने थोड़ा सा रुख बदलने की जरूरत है थोड़ी सी, क्योंकि अब 54 गेंदों में अगर आप 8 विकेट नहीं ले पाए तो फिर आपके पहले जो बल्लेबाजी करने का निर्णय आपके ऊपर थोपा गया था वो बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं आपके गेंदबाज। क्योंकि आपके पास अब जो 169 का जो लक्ष्य था 20 ओवर में, उसको कट शॉट करके ला दिया है 80 रन के अंदर। और 80 रन के अंदर जब एक लक्ष्य आ जाता है और 9 या 8 ओवर शेष रहते हैं, 8 विकेट भी शेष रहते हैं, तो आप बिल्कुल जो चेस करने वाली टीम है उनके साथ ही जाएंगे। और क्यों ना जाएं, क्योंकि तकरीबन पावर प्ले के बाद जैसे मैं कह रहा था ना कि एक समय था जहां पर उन्होंने 6 ओवर में लगभग कुछ ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे और मैंने कहा था कि यहां से भी अगर आपको एक अच्छा पलटवार करना है तो पहली 10 ओवर में आपको 80 रन बनाने होंगे। और वो बिल्कुल उन्होंने सुन लिया शायद। और क्योंकि आप अगले 10 ओवर में कहते हैं ना कि 90 रन बना सकते हैं जब आपके पास 8 विकेट है। और मैं ये भी कह रहा था कि ऐसा रुख अगर आप बदलेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी 169 रन बनाने के लिए। 95 पर पहुंच गया है स्कोर उस रिवर्स स्वीप के साथ। विकास विशाल बहुत ही अच्छी लय में गेंदबाजी का लुफ्त उठा रहे हैं।
यहाँ पर। और मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है, क्योंकि आप अगर 5वीं ओवर में हैं, यहाँ से लेकर आपको 13वीं 14वीं ओवर तक एक भी विकेट नहीं खोने हैं, तो 2 ही विकेट उन्होंने यहाँ पर बरकरार रखे हैं और जोड़ दिए हैं इतने सारे रन। 42 रनों पर खेल रहे हैं, 46 रन कर दीजिए 29 गेंदों में, क्या बात है। और यहाँ पर 99 हो गया है स्कोर, जिसमें 46 हैं विकास विशाल के। और अगर हम देखें यहाँ पर तो एक अच्छी लय में दोनों बल्लेबाज, क्या बात है, क्या बात है। जब आखिरी विकेट यहाँ पर गिरा था तब आपकी टीम का स्कोर था 22 रन, 77 रनों की साझेदारी यहाँ पर हुई है। और कब गिरा था वो विकेट? 3री ओवर में। तो वहां से लेकर अब 3री ओवर की आखिरी गेंद में गिरा था, ये 12वीं ओवर की आखिरी गेंद में क्या होगा? ये सीधा हाथ में, हाँ बिल्कुल, लॉन्ग ऑफ, जैसे कार्तिक कहती है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ टेकन। और ये विकास विशाल की एक अच्छी साझेदारी और एक अच्छी विकेट जाती हुई एक अच्छी पारी समाप्त। 46 रन उन्होंने बनाए 30 गेंदों में, लेकिन वो एक हौसला अब दे दिया है झारखंड की टीम को कि हाँ, हमने अपने कप्तान को खो दिया है, अपने उम्दा एक इम्पैक्ट प्लेयर को खो दिया है पहले, लेकिन अब इस स्थिति से हम हार नहीं सकते, क्योंकि इस ओवर में भी अगर आप इस विकेट को छोड़ दें, 10 रन बिल्कुल आए हैं, 2 चौके और 2 सिंगल्स के साथ। ये थोड़ा सा ओवर टाइम कर गए गेंद को और एकदम हल्के से खेल लिया और वो गई सीधे लॉन्ग ऑफ के हाथ में। और खेलना चाहते थे ऊपर से बिल्कुल 6 रन के लिए, लेकिन वो शायद तेजी से आए या ये अर्ली गए शॉट में, दोनों में से एक। और जब वो होता है तो सीधा आप कैच थमा बैठते हैं। विकेट जाता हुआ 3रा और विकास विशाल का कैच पकड़ा हेमंत रेड्डी ने। त्रिपुराना विजय की गेंदबाजी पर 12 ओवर के बाद 99, 3 विकेट के नुकसान पर है झारखंड। Dive into the heart of cricketing excellence with the Cric app. Download it now for an unparalleled experience during the World Cup 2023 ODI. We're your gateway to all things cricket, delivering the latest news, in-depth analysis, and exclusive content that's second to none. Brace yourself, as World Cup is always full of surprises, and this year is sure to be no different. Which teams will underperform? Will there be any dark horses that challenge for the title? In the past, we have seen teams like Afghanistan and Ireland come close to beating some of the top teams in the world. In the 2019 World Cup, we saw England win their first ever World Cup title. The 2023 World Cup is sure to throw up some more surprises. Which teams will be the ones to watch out for? With Cric, we ensure you're never far from the action. यहाँ पर थोड़ा सा एक जीवनदान मैं कहूँगा आंध्रा के लिए, क्योंकि ये मैच जो है उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। वो जो साझेदारी थी 77 रनों की 55 गेंदों में मोहित कुमार और विकास विशाल के बीच में, ऐसे ही लग रहा था कि मैच जो है वो फिसलता जा रहा है। अभी भी झारखंड जो है मैच के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन वो कहते हैं ना, 1 brings 2। अगर एक विकेट गिरा है और अगर वो यहाँ पर सफल हो जाते हैं आंध्रा के गेंदबाज मोहित कुमार को भी आउट करने में, तो फिर आपके पास 2 नए बल्लेबाज होंगे क्रीज पर। और फिर अगर आप कहेंगे कि रिक्वायर्ड 109 के आसपास है, फिर शायद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ललित मोहन माफ कीजिएगा, एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और यहाँ पर कोई भी 2 राय नहीं है, प्रयास जरूर रहना चाहिए आंध्रा की टीम का कि जितने ज्यादा हो सके वो कुमार सूरत से जो नए बल्लेबाज है उनसे वो गेंदें खिलवाए, ताकि दबाव जो है दूसरे एंड पर बनता रहे। लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा आसपास, और आसानी से यहाँ पर 1 रन 2 रन चुरा लिए। और जो दबाव, कुछ भी आप प्रयास गेंदों में अगर वो 10 रन भी बनाते हैं, 11 रन भी बनाते हैं, अनुभव आ जाता है। अगर आप करने में ऐसी भी यहाँ पर LBW अपील, लेकिन शायद जो है इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। बहुत ही फ्लाइटेड गेंद थी और बहुत ऑफ स्टंप के बाहर थी। उसे अक्रॉस जाकर स्वीप करने का प्रयास किया, रन लिया वहां पर, और अपील तो थी कीपर और गेंदबाज से। एक बार फिर से मैं रिप्ले, इम्पैक्ट तो आउटसाइड ऑफ नहीं है, पर शायद जो है गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती जा रही है। एक्चुअली क्लोज हो सकता था क्योंकि इम्पैक्ट इन लाइन था, लेकिन क्या वो स्टंप से टकरा रही थी। इसी बीच एक और चतुर रनिंग बिटवीन द विकेट्स आगे आकर उसे
खेलना चाहते थे मोहित कुमार लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन गेंद अंदर आई, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, पैड से टकराई और पॉइंट की तरफ चली गई। और मोहित कुमार ने देखा भी नहीं, वो जॉग करते करते ही चले गए दूसरे एंड पर। और कुमार सूरज को पहले पता नहीं चला कि ये मुझे भागना है या नहीं भागना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा ये इवनिंग जॉग के लिए आए हैं या ये रन है। फिर बाद में उन्हें लगा कि नहीं ये तो सच्ची में रन भाग रहे हैं और उन्हें थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ी कुमार सूरज को। आखिरी गेंद इस 13वें ओवर की 104, 3 विकेट के नुकसान पर अक्रॉस गए, पीछे गए और धकेल दिया उसे डीप मिड विकेट की तरफ। मांग 2 की है लेकिन मिलेगी सिर्फ एक अच्छा ओवर बीतता हुआ झारखंड के लिए, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, भले ही चौका नहीं आया और इस ओवर में 6 रन टोटल आए। 13 ओवर के बाद 105, 3 विकेट के नुकसान पर झारखंड, 7 ओवर में 64 रनों की आवश्यकता। Cric presents At the ICC Cricketing World Odyssey Cup with Cric 2023. Join Get us ready as for we the cricketing journey of a lifetime with the Cric app. The ICC World Cup 2023 is here, and it's a celebration of the spirit of cricket. Expect sensational centuries, breathtaking catches, and unforgettable moments. This year's tournament promises to be a rollercoaster of emotions, and we're your ticket to the heart-pounding action. 2019 edition, England scripted history by clinching their first ever World Cup title in a nerve-wracking final. As we approach the 2023 World Cup, anticipation is sky high. Will there be more iconic moments that resonate for generations to come? Stay connected to real-time updates, thrilling highlights, and expert analysis. Cric ensures you're always at the forefront of the cricketing excellence that defines the ICC World Cup. Get ready for a cricketing spectacle like no other. At the Cricketing Odyssey with Cric. Get ready for the cricketing journey of a lifetime with the Cric app. The ICC World Cup 2023 is here, and it's a celebration of the spirit of cricket. Expect sensational centuries, breathtaking catches, and unforgettable moments. This year's tournament. गोलामारू मनीष की दूसरी गेंद पर लगा दिया है चौका और ये अब थोड़ा सा दूर जाता हुआ आंध्र से ये मुकाबला, क्योंकि हर एक गेंद पर ये पटकी हुई गेंद, ये फ्लाइट अगर आप दे रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ दीजिए, पूरे दिल के साथ दीजिए। अगर आप बीच में ही उसको कर्टेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी क्विक कर रहे हैं, ये कार्तिक कह रहे थे कि आप पेस ऑफर कर रहे हैं। अगर आप स्पिनर हैं तो स्पिनर की भांति आपको गेंदबाजी करनी होगी। अगर आपके पास वो पर्याप्त विकल्प नहीं है एक 7वें 8वें गेंदबाज का जो रहता है टीम में, लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्लाइट पूरी तरह से नहीं देंगे तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते किसी फील्डर को। और वो फील्डर भी जो बैकवर्ड पॉइंट पे थे वो क्यों अपनी दाहिनी तरफ जा रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अच्छा कट शॉट अगर आपने देखा होगा तो वो बिल्कुल एक स्ट्राइड ले लिया था उन्होंने कि शायद कवर्स की ओर खेला जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने वो मुंह खोल दिया बल्ले का और वो बिल्कुल स्टीयर कर दिया बाउंड्री के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी वापसी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वापसी, ये चाहिए, ये दमखम, ये गेंदबाजी आपको थोड़ी और पहली अगर कर सकते थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। यहां पर एक विकेट मिलता हुआ, बिल्कुल सही समय एक विकेट प्राप्त करने का, लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है? नेल्सन फिर एक बार अपना काम करता हुआ अगर उन्होंने अभी मोहित कुमार को भी आउट कर दिया, अब जैसे ये नए बल्लेबाज थे कुमार सूरज, उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होती थी अगर डॉट बॉल्स बिल्ड होते तो, और बिल्कुल ये ओवर में वही हुआ। थोड़ा एक चौका जरूर आया था लेकिन 2 सिंगल्स आए थे और यहाँ पर पिच को भाप नहीं पाए थे इतनी जल्दी। कुमार सूरज अपने आप को रूम दिया लेग साइड पे और उसे अगेंस्ट द टर्न जो है ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते। गेंद जो है ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई और अंदर आई और वो चूक गए उस गेंद से कनेक्ट करने के लिए और गेंद जो है मिडिल स्टंप से जाकर टकराई। बट हाँ, जो हम बात कर रहे थे 1 brings 2 बिल्कुल वैसे ही हुआ है, क्योंकि 99 पे 2 थे और अब 111 पे 4 हैं। और अगर इस टाइम पर जो सेट बल्लेबाज हैं मोहित कुमार, उनका विकेट जल्दी लिया जाता है तो यू नेवर नो, क्योंकि 38 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज को थोड़ा तो समय लगेगा एडजस्ट होने में, बस अगर फील्डिंग प्लेसमेंट थोड़ी बेहतर हो सके कप्तान से तो और भी अच्छी होगी। और अगर ऐसे शॉट्स लगते तो ठीक है, आप बल्लेबाज को कह लीजिए गुड शॉट, क्योंकि यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल हुआ है रवि यादव द्वारा। फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उन्होंने एक रिस्क जरूर उठाया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद तक पहुंचे और लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन इस केस में गेंद जो है लॉन्ग ऑफ को क्लियर कर गई। अब यहां पर बॉलर को खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आप ऐसा रिस्क जोखिम उठाएं
और वहां पर लॉन्ग ऑफ पे आउट, और अगर पहली बॉल पे आउट हो जाते तो हम ये कहते थे ये क्या खराब शॉट खेला है उन्होंने। तो यही होता है, लिव बाय द स्वॉर्ड और डाइव बाय द स्वॉर्ड। अगली गेंद ऐसे लग रहा है कि पिच में थोड़ी घुमाव है, क्योंकि अगली गेंद जो है घूमकर बल्ले का लीडिंग एज लेकर पॉइंट की तरफ चली गई। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ओवर झारखंड के लिए, क्योंकि 12 रन उस ओवर में आते हुए 14 ओवर के बाद 117, 4 विकेट के नुकसान पर 169 का पीछा करते हुए। Cric, your Cricket World Cup companion, join us on a quest for cricketing glory. The ICC World Cup 2023 is set to redefine cricket history, and Cric ensures you don't miss a single chapter. Will established champions maintain their reign, or will emerging talents steal the spotlight? Be part of this captivating story, where cricketing dreams come true. This tournament is a stage where cricketing dreams are born and legends are made. Will the established cricketing giants continue their dominance, or will the rising stars seize the spotlight? With Cric by your side, you'll witness every breathtaking moment, every match-turning performance, and every record-breaking feat. As the cricketing world unites in anticipation, Cric will be your trusted companion, from live scores and in-depth analysis. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो इजी सिंगल्स नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पर अब कॉन्फिडेंस से भर गए हैं मोहित कुमार भी, क्योंकि खुद तो 37 रनों पर खेल रहे हैं, 32 गेंदों में 5 चौके लगाए। लेकिन रवि यादव के उस एक बड़े प्रहार से, उस बड़े छक्के से एक तो तय कर दिया कि ये 58 या फिर जो भी रन बचे हैं, 51 रन, उसके लिए वो 35 गेंदें तो इस्तेमाल नहीं करने वाले। क्योंकि देखिए ये तो एक अलग ही रवैया अपना रहे हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड स्वीप उन्होंने कर दिया, एक बहुत ही बढ़िया 6 रनों के लिए एक शॉट खेल दिया है रवि यादव। आप तो केवल एक ही भाषा जानते हैं, 6-6, 3 गेंदों में 12 रन 2 छक्कों की सहायता से। और अगर ये लाइन करेंगे तो ये शॉट तो बनता है, और अगर कनेक्शन वेल है तो ये देखिए ये फील्डर बहुत ही पीछे खड़े भी थे, और शायद, और ये देखिए फिर एक बार शायद मिस टाइम्ड है, अभी की बार शायद मिस टाइम्ड है, सीधे हाथ में नहीं, छोड़ दिया है, लॉन्ग ऑफ ने छोड़ दिया है एक कैच जो अब मैच तय कर सकता है शायद। यहां पर रवि यादव का कैच छोड़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। क्यों आप ये करेंगे ऐसी स्थिति में जहां पर आपके हाथ में मैच आ सकता है, अगर आपने वो कैच पकड़ लिया होता तो? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आधी मेहनत तो कर दी थी, लॉन्ग ऑफ से भागकर आए और गेंद तक पहुंचे, लेकिन अंतिम समय पर गेंद जो है उनके हाथ से छिटक गई। नीतीश कुमार रेड्डी थे फील्डर जो वहां पर रहे। मौजिया, बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऐसे टाइम पर आपको ये कैचेस पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे तो कैचेस विन मैचेस तो होता ही है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर एक कैच पकड़ पाते तो फिर आप मैच जीत पाते, लेकिन अगर आप एक कैच नहीं पकड़ते तो फिर हाँ गारंटी हारने की जरूर बढ़ जाती है। अब इमीडिएटली यहाँ पर थोड़ा उन्होंने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया ललित मोहन ने। उन्होंने देखा कि यहाँ पर रवि यादव सिर्फ छक्कों की भाषा बात कर रहे हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, उनसे दूर लेके जा रहे हैं और गति बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं रवि यादव को। क्योंकि एक और चीज है रवि यादव में, वो वी में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, या तो मिड ऑन या मिड ऑफ, या फिर अगर स्वीप खेल रहे हैं तो फिर स्क्वायर लेग। इनसाइड आउट शॉट उन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, और इसी बीच यहाँ पर खराब शॉट, बहुत ही खराब शॉट, क्योंकि 2 गेंद पहले तो आपका कैच छोड़ दिया था 12 पर, और 13 पर आपने एक और कैच का यहाँ पर एक मौका दे दिया है। फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी गति की थी, लेकिन बहुत जल्दी अक्रॉस चले गए रवि यादव, उसे पैडल करना चाहते थे और गेंद सीधा बल्ले से लगकर शॉर्ट थर्ड की तरफ चले गए, आसान सा कैच। और अब शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शायद मुझे स्ट्रेट ही खेलना चाहिए था। सीधी सी बात है, आपको ओवर में 9 रन आ गए हैं, रिक्वायर्ड रन रेट 8 की है, आपको ये शॉट खेलने की आवश्यकता ही क्या है? वो शॉट जिससे आप कंफर्टेबल नहीं, मैं फिर भी समझ सकता हूं अगर आपने वी में शॉट खेला होता तो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी, वो कहते ना कुछ अलग ट्राई करने के चक्कर में अपना विकेट भी गवा बैठे। 5वें विकेट का पतन होता हुआ 126, 5 विकेट के नुकसान पर झारखंड। 5 ओवर में 43 रनों की आवश्यकता, अभी भी मैच में उनका ही पलड़ा भारी है। लेकिन अगर यहाँ पर मोहित कुमार आउट हो जाते हैं तो यहाँ पर किस्सा जो है उल्टा हो सकता है। ललित मोहन अपने 4 ओवर समाप्त करते हुए 4 ओवर 25 रन और 1 विकेट, पहले बॉलर बन गए जिन्होंने अपने 4 ओवर
पूरे कर दिए। और अगर हम बाकी गेंदबाजों की बात करें तो शायद अब हम वापसी देख सकते हैं चीपुरापल्ली स्टीफन की 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने अभी भी कैच छोड़ा, लेकिन किस्मत अच्छी थी उनकी कि 2 गेंदे बाद आउट हो गए। रवि यादव 2 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं। कवोरी साई तेजा 2 ओवर 24 कोई विकेट नहीं। त्रिपुराना विजय 3 ओवर 29 1 विकेट। ललित मोहन ने अभी अपने 4 ओवर का स्पेल खत्म किया है, 4 ओवर 25 1 विकेट। और मनीष गोला मारू 2 ओवर 22 1 विकेट। तो स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए जरूर हैं, लेकिन 9 ओवरों में स्पिनर्स ने 76 रन भी दिए हैं। तो 8 रन प्रति ओवर गए हैं। और लेकिन एक काइंड ऑफ कोलैप्स से मानूंगा। 99 पे 2 थे झारखंड, अब 126 पे 5 हो गए हैं, यानी 27 रनों में उन्होंने 3 विकेटें खोई हैं। 3 विकेटें खोई हैं उन्होंने। और गेंदें कितनी हुई हैं? 19। तो 19 गेंदों में 27 रन और 3 विकेटें। तो थोड़ा यहाँ पर वापसी करने का प्रयास जरूर कर रही है आंध्रा की टीम, भले ही अपने स्पिनर्स के दमखम पर, लेकिन उन्हें चाहिए 1 विकेट और बड़ा विकेट, और वो भी मोहित कुमार को। क्योंकि अगर अब मैं ये इक्वेशन देखूं और फिर वहां पर मोहित कुमार का विकेट देखूं, मान लीजिए मैं ये इक्वेशन देखता हूं 126 6 विकेट के नुकसान पर, और फिर मैं देखता हूं 29 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है, 4 विकेट हाथ में है, तो फिर सबसे पहले झारखंड यही सोचेगी कि पहले हम एक साझेदारी बनाए, क्योंकि हमारे पास 4 विकेट शेष है। लेकिन अगर मोहित कुमार है वहां पर, तो फिर मोहित कुमार आराम से ये सोचेंगे कि मैं अगर एक ओवर में 3 गेंदे भी खेल लूं, तो उन 3 गेंदों में मैं 5 या 6 रन निकाल सकता हूं। और अगर मैं पहले 3 गेंदों में 5 रन निकाल लेता हूं, तो फिर बाकी के 3 गेंदों में कम से कम 2 रन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं सामने वाले बल्लेबाज से। तो ऐसे अगर आप अगले 3 ओवर में 7-7 रन भी लेते चले, 3 ओवर में 21 रन भी बना ले, तो भी आखिरी 2 ओवर में 20 रन बनाना, अगर आपने विकेट नहीं खोया, इतना मुश्किल नहीं होगा। और इसी बीच यहाँ पर बहुत ही अतरंगी स्ट्रोक खेला है यहाँ पर मोहित कुमार ने। एक लेंथ गेंद थी, उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि वो अक्रॉस जाकर स्कूप करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने संकेत दे दिया था नीतीश कुमार रेड्डी को, और नीतीश कुमार रेड्डी ने वो देखा कि वो पहले ही अक्रॉस गए हैं, तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहरी वो गेंद डाली, बॉडी लाइन पर डाली, और गेंद जो है उनके आंखों के पास आ रही थी, और बहुत ही एकदम अजीब तरीके से उसे स्कूप कर दिया कीपर के ऊपर से, और डीप थर्ड के पास गेंद चली गई। 1 रन मिला वहां पर। 127 5 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। तो चलिए, जो रिकी भुई कप्तान है, उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। विकेट तो नहीं मिला, लेकिन मोहित कुमार स्ट्राइक से दूर चले गए। अब आपके ऊपर है, क्या आप इन 4 गेंदों में कम से कम 3 गेंदे भानु आनंद से खिलवा सकते हैं और रन एक भी नहीं देंगे? चलिए, एक डॉट बॉल तो यहाँ पर आ गया। धीमी गति की गेंद, काफी वाइड ऑफ स्टंप के, और से स्टीयर करने का प्रयास भानु आनंद द्वारा, लेकिन चूक गई गेंद। सिर्फ वाइड लाइन, जस्ट वाइड लाइन के अंदर थी, लेकिन एक कीमती डॉट बॉल। और अब जो है शायद डीप थर्ड को सर्कल के अंदर बुला रहे हैं रिकी भुई, एटलीस्ट वो रिएक्शन तो मुझे वही लगा। और जितने इस खिलाड़ी हो सके आप भानु आनंद के लिए सर्कल के अंदर ही रखें। अगर भानु आनंद ने सर्कल को भेद दिया या फिर सर्कल के ऊपर से गए, तो वो उनकी अच्छी बैटिंग होगी, आपकी खराब बॉलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप आसानी से एक रन दे रहे हैं, तो फिर याद रखेगा साझेदारियों से भी रन बनते हैं। और बिल्कुल साझेदारियों से रन तो बनेंगे। यहां पर एक कैच का मौका, थोड़ा सा दूर गेंद जाके गिरा, और एक चौका यहां पर प्राप्त हुआ है। एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस शॉट में फोर्स कर दिया बल्लेबाज को भानु आनंद, जो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन वहां पर पॉइंट के फील्डर से थोड़ा सा दूर उस बॉल को ढकेला और एक चौका प्राप्त कर दिया। अगर यहाँ पर वो विकेट आ जाती भानु या फिर मोहित कुमार की, तो कोई भी वो फर्क नहीं जानते, क्योंकि 6 विकेट, अगर 6 विकेट होते हैं, अगर आप एक सिरे से मोहित कुमार को रनों के लिए बांध दें, तो ज्यादा कुछ हलचल वहां पर नहीं दिखाई दे। फुल टॉस, यॉर्कर की एक कोशिश, बैक टू बैक बाउंड्रीज, क्योंकि खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन बॉल गई है डीप थर्ड की ओर, और वहां पर फील्डिंग का एक बहुत ही साधारण सा प्रयास, और वो अपने आप को खुश नसीब मानेंगे भानु आनंद, लेकिन कहेंगे थैंक यू। 2 गेंदों में 8 रन उन्होंने अपने नाम और टीम के नाम कर दिए। 135 5 विकेट के नुकसान पर ये होगी इस ओवर की 16वें ओवर की आखिरी गेंद, जो अब गेंदबाज कर सके, उन्हें थोड़ा सा प्रत्युत्तर इस इनिंग्स में मिल रहा है। भानु आनंद 3 गेंदों में 8 रन, 2 चौके लगाए उन्होंने। स्लोअर वन फिर एक बार खेल दिया, जो खुद को पेश कर रहे हैं। 16वीं ओवर हो गई है समाप्त। 137 5 विकेट के नुकसान पर 32 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में।
जी हाँ, और यहाँ पर एक अपडेट ईरानी कप से, क्योंकि वहां पर स्टम्प्स घोषित कर दिया है पहले दिन की समाप्ति के बाद। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और लगभग 300 के आसपास पहुंच ही गए हैं। 298 8 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर के बाद। और यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि पिच में ऐसे लग रहा है कि स्पिन काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपको विकेट्स बताऊं, धर्मेंद्र सिंह जडेजा स्पिनर 2 विकेट, युवराज सिंह डोडिया स्पिनर 2 विकेट, पार्थ भट्ट स्पिनर 4 विकेट। स्पिनर्स ने यहाँ पर 8 विकेट, 8 के 8 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स के खाते में ही गए हैं, क्योंकि एक ऑफ ब्रेक बॉलर है दोदिया जिन्होंने 2 विकेटें लिए, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 6 विकेटें ली है। लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान देंगे, बैटिंग स्कोर कार्ड की तरफ, तो रेस्ट ऑफ इंडिया नाखुश होगी। क्यों? क्योंकि साई सुदर्शन आप छोड़ दीजिए, 72 रन बनाए, लेकिन आप सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि कितने बल्लेबाजों ने 30 रनों का आंकड़ा पार किया और फिर आउट हुए। सबसे पहले मयंक अग्रवाल 32, फिर कप्तान हनुमा विहारी 33, फिर श्रीकर भरत 36, फिर शम्स मुलानी 32। तो ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30 का आंकड़ा पार किया और फिर उसके बाद तुरंत आउट हो गए। फिलहाल लोअर ऑर्डर से थोड़ी बहुत एक फाइट बैक नजर आ रही है। सौरभ कुमार 30 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक टाइम पर थोड़ी मुश्किल परिस्थिति में थे रेस्ट ऑफ इंडिया, 183 पर 5 थे, लेकिन उसके बाद एक 59 रनों की साझेदारी शम्स मुलानी और श्रीकर भरत के बीच में, और फिर उसके बाद 38 रनों की साझेदारी पुलकित नारंग और सौरभ कुमार के बीच में। और यहाँ पर अब ऐसे लग रहा है कि अगर रेस्ट ऑफ इंडिया जो है और 50 रन जोड़ देती है कल के खेल में, कल के आधे घंटे के खेल, आधे घंटे में तो नहीं, अगर 1 घंटा खेलेगी तो फिर ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से पहले दिन पर अगर पिच इतनी टर्न हो रही है, यानी पहले दिन पर आपके 8 के 8 विकेट अगर स्पिनर को जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पिच और भी खराब होते ही जाएगी। और यहाँ पर अगर आपने 350 रन बना लिए तो फिर ये आपके लिए चाहे आप मैच जीते या ना जीते, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स लीड ही बहुत मायने रखती है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये एक ऐसी स्थिति में अब मैच है ना कि 60-70 रन अगर कल बनाते हैं तो एक अलग सा कलर इस पूरी मुकाबले में आ जाएगा। क्योंकि 300 के अंदर आप एक खुद को एक अच्छी पोजीशन में मानते हैं जब भी आप मतलब आपकी फर्स्ट इनिंग्स जब आएगी, जब चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स आएंगे और वो डट के खेलेंगे और पहली इनिंग्स में वो बढ़ोतरी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे और काफ़ी अच्छी लाइनअप है सौराष्ट्र की। लेकिन अगर आपने वो 370 या 380 बनाने का मौका सामने वाली टीम को दे दिया तो आपके लिए फिर वापस वो एक फॉलो ऑन का भी एक डर रहता ना कि 200 रन, जैसे अभी इनके विकेट्स जल्दबाजी में गए, श्रीकर भारत और शाम्स मुलानी में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, इसीलिए वो थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर वो नहीं होती तो शायद 250 के आसपास वो पारी लड़खड़ा जाती। यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि 200 रन आपको बनाने हैं, सेकेंड डे पिच होगा, भारत में घुमाव होगा, फिर वहाँ पर ये एक अच्छी तरीके से दोनों भी टीम को अब सोचना होगा कि सुस्थिति में ले आए, क्योंकि रिजल्ट आए ना आए मैच का, इस ईरानी कप का विनर डिसाइड हो सकता है। क्योंकि पहली इनिंग्स के लीड पर आप रणजी और ईरानी कप में विनर्स डिसाइड करते हैं। बहरहाल यहाँ पर चिपुरपल्ली स्टीफन मैं काफी हद तक मैंने चिरापुरापल्ली कह दिया था उनको पहले में। अच्छा, वो चीरापूंजी नहीं कहा, चीरापूंजी नहीं कहा तो यहाँ बारिश हो जाती। चिपुरपल्ली स्टीफन को एक छक्का लगा दिया है इस ओवर में, तो वो जो दायरा है ना वो अब छोटा छोटा हो रहा है। 25 रनों की आवश्यकता है, 5 है, 169 ही बनाने हैं। अब वो ही जो आ गया है ना वो एक आपको तसल्ली देता है कि हमने अच्छी बल्लेबाजी की है। यहाँ पर अगर मोहित कुमार का विकेट भी मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता थोड़ी सी मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि चौपर और T20 में आपके पास 8 ऐसे लोग प्रॉपर होते हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। या तो आप गेंदबाजी में निपुण हैं तो बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। थोड़ी बहुत से मैं कहता हूं कि 10-15 रन तो आप बना ही सकते हैं। अगर आप 10 गेंदे भी खेलते हैं तो 15 रन आपके बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए भानु आनंद 17 रनों पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 1 छक्का और 2 चौके लगाए वहाँ, और दूसरी तरफ 37 गेंदों में 40 बनाए। लेकिन वो 40 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल कर दिया और खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। 2 फील्डर, स्वीपर कवर और बैकवर्ड
डीप बैकवर्ड पॉइंट को वहां पर ऐसे छेद दिया है जैसे एक स्ट्रेट रूलर से लाइन खींच दी हो. बहुत ही अच्छा कट शॉट. और देखिए कौन खेल रहा है. ये दो बल्लेबाज जिनको गेम समझ में आ रही है, जहां उन्हें पता है कि रिस्क नहीं लेनी है. ये आप ग्राउंड शॉट से सिंगल डबल में खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉल को टप्पा गिरा रहे हैं तो आप आउट नहीं हो सकते. ये एकदम उन्होंने गांठ बांध ली है. और यहाँ पर मोहित कुमार ने चौके के साथ कर दी है 17वें ओवर की समाप्ति. 149 पर है 5 विकेट के साथ झारखंड. 20 रनों की जरूरत 18 गेंदों में. World Cup wonders await on Cric. The ICC World Cup 2023 is your ticket to cricketing paradise. Cric invites you to witness the magic unfold as teams from around the globe compete for the ultimate prize. Be prepared for nail-biting finishes, record-breaking performances, and the emergence of new cricketing heroes. Cric extends a warm invitation to cricket enthusiasts worldwide, inviting you to experience the awe-inspiring spectacle that is the ICC World Cup. Brace yourself for edge-of-the-seat moments, heart-pounding finishes, and a showcase of unparalleled talent from cricketers hailing from diverse corners of the globe. As the world's top teams collide, expect record-breaking innings, breathtaking catches, and match-turning performances that will etch themselves into the annals of cricket history. New heroes will emerge, and familiar legends will strive to etch their names in glory once again. With Cric, you won't miss a single ball of this epic cricketing journey. Get ready to be captivated by World Cup wonders. Oh, the boundaries are coming thick and fast now. It's almost like the match is about to end, and Jharkhand are just making their intentions pretty clear. And what's good to see from Jharkhand's point of view that it's not Mohit Kumar who's scoring the winning runs. I mean, he's leading the part to victory. But Bhanu Anand who's coming in and taken all kind of pressure off, any kind of pressure, whatever it was, on Mohit Kumar, because he has rocketed on to 21 from 8 and now make that 23 from 10. Well, things not at all going Andhra's way, because this should have been just a single. It was dabbed towards short third and they went for a quick single. The throw came in at the keeper's hand. It was a directed, the ball deflected, and the single was converted into a couple. So 6 runs of the first 2 balls and 155 for the loss of 5 wickets, and the required run rate now is under 5, not even under 6. 4.9, 14 needed from 16 balls, and Pininti Tapaswi, who might be just blaming himself once he sees the replay of the way he got out with the bat today. Some seriously ordinary batting, has been entrusted the responsibility of to just try and get something into this match, or the captain feels that we can't win this match, try and get a wicket or two. Maybe let's see going forward in this tournament. Maybe you could turn out to be a good bowler for us, because as far as Andhra are concerned, they are at number 2 in the points table. So a loss today may not push them down to number 3, because Jharkhand's net run rate is not that great. So we might see 3 teams at 8 points in the points table, but the order may not change. Kerala would be on top, not Kerala, yes, it's Kerala, would be on top, Andhra would be on second, and Jharkhand would be on third, because given that they still need another 12 runs, I think this will go into the 19th over. And if they win the 19th over, I don't think that it's going to be that massive a run difference, unless Anand can finish this off with 2 sixes of 2 balls, 157 for 5. 8 runs have come from this 18th over. A free gift there from Tapaswi, a full toss, but Anand was definitely not expecting it. Was taken by surprise, Bhanu Anand, and he mistimed it towards long on. He's still smiling, and he's saying, how did I miss that? 9 runs from this over so far. 158 for 5 is the score, and the final delivery of the 18th over. 11 more needed now from 13 deliveries, as Mohit Kumar his responsibility now would be to just stay till the end. Not that there could be a chance of a defeat from here, but you don't want to take any chances. You don't want to try and get to that glory shot right now. If Bhanu Anand is taking a team to victory, so be it. You stay there at the other end, because Bhanu Anand's wicket now may not make that much of a difference. But if Mohit Kumar falls, you never know, it could lead to a collapse. But a very good over for Jharkhand. 10 runs coming from that over. The first 2 went for 6, and then the remaining balls went for singles. So it's 10 from that over. Just 10 more needed now. Will we have a 20th over? No, not. We'll know in a short while.
Cric, where cricket unites the world. The ICC World Cup 2023 is more than a tournament, it's a global phenomenon. Cric connects fans worldwide as we follow the highs and lows, the triumphs and heartaches of this cricketing extravaganza. This tournament transcends boundaries, languages, and cultures. It's a stage where cricket aficionados from all walks of life unite to witness the highs and lows, the jubilant triumphs, and the heartbreaking heartaches. With Cric, you're not just a fan, you're part of a global community that shares the same fervor for the game. Whether you're cheering for your home team, a long-standing favorite, or just reveling in the sheer joy of cricket, Cric connects you to a worldwide network of passionate fans. Share your excitement, engage in discussions, and experience the electric atmosphere of this cricketing extravaganza together. Let's unite in the name of cricket as we witness something called as what do you say? It is just a formality that is remaining in this match now. 9 runs to get in the remaining 11 deliveries. And I'm saying this formality because the way Bhanu Anand has shaped this innings from the moment he's entered the field, it's like a threat to Mohit Kumar's well-deserved half century as well. Because if he gets the remaining 9 runs in this over all by himself, he'll move to 34 of say any deliveries that he faces. But 47 of 41, I think that scorecard deserves a half century because Vikash Vishal, he deserved a half century, but he was deprived of the feat by 4 runs, thanks to a good catch by Hemant Reddy. But now, Mohit Kumar has a chance to reach his golden number, 50 of this over, because he has the strike now. 8 runs remaining for this match to be pocketed by the Jharkhand team. 5 wickets remaining, 161 on the board. Mohit Kumar batting on 47 of 41. Chipurapalli Stephen, he's conceded 23 runs in the 3.2 overs that he's bowled. A couple of singles in the first 2 deliveries, allowing the batters to be easy, calm, composed and collected. 161 for 5. 8 runs remaining, 3 runs for his half century. Now he guides a full toss from outside the off stump towards the final leg region and gets along for a single only, taking the score to 162 for 5. And Bhanu Anand, if he strikes gold, it will be a deprived half century for his teammate, which is well deserved because the time where Vikash Vishal and Mohit Kumar came together was a time where they required some serious repair work to be done because it was the 3rd over when they lost the 2nd wicket on the score of 22, and from there on till the 12th over's last delivery, it was 99 on the board when they lost the 3rd one in the form of Vikash Vishal. And now from there on, Mohit Kumar has not left the job unfinished or untouched. It is his presence which has allowed the batters like Ravi Yadav, who made 13 of 6, and Bhanu Anand, who is batting on now, he'll be batting on 28 with that couple. Oh, he's taking the fielder for a throw as well. What a time to get a 3rd run. Beautifully done by Bhanu Anand because he was the one scampering on the non-danger end, but to get his teammate in order to get a half century, he has got 3 runs under his belt, and that is some very, very clever thinking. Taking the player on for his throw in the 19th over. Imagine with only a few runs to win, but that shows how involved in a game can a person be if he is there to make the difference. And here, when the fielders are just expecting some big blows, here are 3 runs being taken to shake and wake them up altogether. Now a Yorker, and it's played towards the covers region for a couple, I think. It will be a couple, and a well-deserved 50 for Mohit Kumar. And what a time to get it. In a winning cause, you get 3 runs, it all matters. But in a losing cause, if you get a century also, you feel that, oh, I did just waste my century, and it is all in vain. But here, with a couple of runs remaining, a well-deserved person gets the chance to play the glory shot. Will he go for the glory shot, or will he just steer it down to some area and get the couple of runs remaining? What will be the delivery bowled by Chipurapalli? He bowls it on a fuller note, and he gets it over the covers region for a well-deserved winning run chance. 4 to end the match. 5 wickets remain. Comprehensive can be the word that will be associated with the win.
Absolutely comprehensive is what is nothing short of what can be said, because they were in a bit of a trouble earlier on, chasing 169 for victory. Were Jharkhand, they lost two quick wickets, Saurabh Tiwari and Nazim Siddiqui. And the score was 22 for 2. Saurabh Tiwari fell for 2. Nazim Siddiqui was run out for 15. But then came the big stand of, I can call it a match winning, I guess, 77 run stand for the third wicket between Vikash Vishal and Mohit Kumar. Vikash Vishal fell for 46. And then there was a bit of a collapse as they slipped from 99 for 2 to 126 for 5, with Kumar Suraj falling for 4 and Ravi Yadav falling for 13. But then in came Bhanu Anand and and like a true finisher, just finished the game off. 29 unbeaten from 13, 3 fours and 1 6. But the catalyst of the run chase was Mohit Kumar, unbeaten 54 from 44 with 7 fours. The bowling was okayish. One thing that they can be proud of, that's Andhra, is that they dragged the game till the 19th over, and maybe if they had got 10-15 runs more, they would have seen more attacking strokes from the batters, maybe more chances of wickets, and a wicket here and there could have just made things interesting. But Chipurapelli Stephen bowling well with the new ball, 4 overs, 1 for 33. Nitish Kumar Reddy also bowling well with the new ball, finishing with 3 overs, none for 23. But Kaveri Saiteja going for 2 overs, none for 24. Tripurana Vijay 3 overs, 1 for 29. Lalit Mohan 4 overs, 1 for 25. He tried and putting the pressure on the opposition, but he was kind of short of wickets, 1 for 25. Manish Golamaru 2 overs, 1 for just 24 deliveries. And then talking about the first innings, well, Andhra, I think, missed out on an opportunity. They could have got to maybe 180 or 190. And it was Ricky Bhui, the captain, who stood tall, 53 from 38. But had he got some more contributions from the other batters, they could have got to 180 or 190. And Vikas Kumar was the pick of the bowlers with 3 for 26. So that's it from this game then, as Jharkhand Swapnil signing off. But don't go IST. We shall be releasing a preview, look into the World Cup, and we are talking about 3 teams. The first might add, that's the Netherlands, Afghanistan and Bangladesh. Where do these teams stand? I mean, do these teams stand a chance? Can they cause upsets? Where can they finish in this World Cup? We are starting with 3 teams today, 2 teams tomorrow, 2 teams on Tuesday, and eventually we'll wrap up with the top 3 favorite teams, at least from what we feel, towards before the start of the mega tournament on 5th of October. So please do watch out for the podcast to go around. It's 8:30 p.m. IST, and you can pen in your views. SGT. 8:30 No, 8:30 p.m. IST. IST? Yeah, 8:30 p.m. IST, and it'll be 11 p.m. In Singapore at that point in time. And you can listen to our podcast and then pen in your views as well as to where do you think these teams stand in their respective places. On that note, this is Karthik and Swapnil signing off. Bye-bye. Take care. See ya. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.